माध्यम से इस विधेयक को इस सदन में I have indicated, honorable members, I'll come back to the House on the issue and, if required, take your inputs. By body language you have raised, some words you have used which have fallen on my ears. All right. I have a sound sixth sense to anticipate what Mr. Pramod Tiwari was going to say. I can figure out, please. सर, मैं आपकी अनुमति से इस सदन की अनुमोदन के लिए ये संशोधन विधेयक प्रस्तावित करता हूं। Give me 5 minutes. आज प्रारंभ में चेयरमैन साहब, मैं कुछ विषय को आपके सामने सदन की विचारार्थ जाने के पहले उल्लेख करना उचित मानता हूं। 2014 में जब तत्कालीन आंध्र प्रदेश की विभाजन हुआ, बाइफर्केशन हुआ, उस समय में जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पारित हुई थी, उसमें दोनों राज्यों में I take it as a serious issue. That's why I said I'll come back to you very shortly. Yes, I'll come back to you. No. Sir, आपकी बुद्धि का मैं लंबे समय से कायल हूं। मैंने जो कुछ कहा पूरा समझ गए हैं। इससे ज्यादा इस समय कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बैठिए, प्लीज। Let us proceed with the business of the House. You are very senior members, very senior members, very senior members. Very senior members. One second, honorable members, may first kindly take your seat. First, take your seat. Sir, take your seat. Take your seat. No, take your seat first. No, please take your seat. Honorable members, in this House, we first need to know what has happened. We need to be, one second, promote it, please. No, others have read it also, you have also read it. We need to be sure about it. What I'm saying is, I'll come back to the House very shortly. I'm sure assurance from the chair on this issue. You should wait what I have to say. Please. Honorable Minister. Nothing has been on record, Honorable Minister. आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दोनों जो प्रस्तावित राज्य बने थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दोनों में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए जिम्मेवारी लिया गया था, आश्वासन दिया गया था, प्रॉमिस किया गया था। उसी में दोनों राज्यों में 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी CTU स्थापित करने की भी दायित्व था। One second, Honorable Minister. Honorable members, the information to me. Please take your seat. Please be seated. Please be seated. The intruders in Lok Sabha visitor gallery have immediately been apprehended. The Parliamentary Security Service is examining the matter forthwith. Will apprise the honorable members about the result before I rise for the day. So bear with me. Honorable Minister, no, nothing more than that can be said at the moment. I can come to this House only with firm information. The information so far. सर, आंध्र प्रदेश में इस बीच में ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित हो गया है, उसकी विधेयक पारित हो गया है। Nothing else will go on record. आंध्र प्रदेश सरकार ने Nothing else will go on record.
accept what the honorable जमीन भी minister says. उपलब्ध करवा दिया गया है और वहाँ एक टेम्पररी कैंपस में विजयनगरम में ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश चालू भी हो गया है, ऋषि भी नियुक्ति हो गई है और नया कैंपस की शिलान्यास भी 2 महीना पहले अध्यक्ष जी मैं जाके वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर करके आए। वैसे ही तेलंगाना में भी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की दायित्व था, वहां की राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने में विलंब करने हेतु वो तय नहीं हो पा रहा था। इस बीच में तेलंगाना की सरकार भी जमीन उपलब्ध करवाया है। मैं आज की आपके सामने आज ये प्रस्ताव लेके आया हूँ, संसद की दोनों सदन इस विधेयक को सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 को अनुमोदित करने से, अनुमति देने से परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की संतक के बाद तेलंगाना में भी एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होने वाला है। उसकी महत्व तब बढ़ जाती है जब इस यूनिवर्सिटी की नाम सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखने का प्रस्तावित किया गया है। मैं आज इंट्रोडक्शन समय में इतना ही कहूंगा, सम्मक्का सारक्का भारत की आदिवासियों के अंदर एक सम्मान की स्थान रखते हैं। वो एक लोक उत्सव है, लोक सम्मान की केंद्र है, लोक आस्था की केंद्र है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, ये सारे इलाके की जो जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वे अत्यंत श्रद्धा के साथ जो 2 वर्ष की अंतराल में एक बार एक विशाल कांग्रीगेशन होता है, एक जनजाति महोत्सव होता है, उसी पवित्र स्थान पे उसी जिले में ये सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की प्रस्तावना किया गया है। मैं लोकसभा में भी उसका अनुमोदित हो गया है। मैं आज इस सदन को निवेदन करना चाहता हूं, भारत की जनजाति विषय में गहन अध्ययन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश में जनजाति समुदाय के लिए अनेक प्रायोरिटी की प्रोग्राम लाया गया है। उसमें से ये सम्मक्का सारक्का विश्वविद्यालय भी एक है। मैं आपकी अनुमति से सदन को अनुरोध करता हूं, उसको चर्चा करें और पारित करें। श्री जयराम रमेश, not present. Shri Vivek Thakur, not present. Susri Dola Sen, 7 minutes. If you have you can address the house while sitting. Please. Yes. Ma'am, you can address the house while sitting. We are aware of your ailment. It's okay. Okay. Thank you, Chairman sir. But बुरा मत मानिएगा, इसमें बहुत दिक्कत होती। ये कौन आएगा, जेके आएगा कि रिपीलिंग आएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगा, हमको पता ही नहीं चला। तो अचानक हमको पता चला कि प्रिपरेशन की टाइम भी नहीं मिलता। Once again, I hope you will congratulate me that I have responded to the request I received from the floor leaders. The change has been effected not by me. The change has been effected after there was a request from the floor leaders. So from that perspective, I think an appreciation is due to me. Thank you for the appreciation. Now, Thank you, Chairman sir. On behalf of my party, AITC, I'm thankful to you and my party and my leader, Srimati Mamata Banerjee, as well for giving me the chance to speak.
I will speak in Bangla, my mother language, Yes. if permitted. And a very sweet language. I don't know whether the interpreter is here or not. I don't know. However, I know. You are from Orissa, sir? My neighbor. আমাদের পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা ওয়েলকাম করতে চাই। ঘটনাচক্রে ছোটবেলা থেকে আমি ভালো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি, এটা আমার সৌভাগ্য। সেই জায়গা থেকে এখনকার এই আজকে দিন ও সবকা সাথ সবকা বিকাশের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যা দেখতে পাচ্ছি, ইতিহাসকে যেভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে, ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেভাবে পাঠ্যপুস্তক থেকে সেলুলার জেল, নতুন ভুল মিথ্যা ইতিহাস লেখা হচ্ছে, সেটা খুবই দুঃখের, দুর্ভাগ্যজনক। একটা উদাহরণ দিতে চাই। সম্প্রতি লেবার স্ট্যান্ডিং কমিটি স্টাডি ভিজিটে আন্দামানে গিয়ে সেলুলার জেলে যা দেখে এলাম, যেখানে ব্রিটিশ আমলে 90% বন্দী ছিলেন বাঙালি, সেখানে নেতাজি থেকে সুভাষচন্দ্র বোস থেকে বারিন ঘোষ, বীরেন দত্তগুপ্ত এদের বাদ দিয়ে বাঙালি বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তকে পাগল বানিয়ে সাভারকরকে বীর বানানো হয়েছে। তার জন্য সবার জন্য আলাদা একটা জ্যোতি, আর সাভারকর জন্য, বীর সাভারকরের জন্য আলাদা একটা জ্যোতিও জ্বালানো হয়েছে। অথচ দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তিনি এমন একজন বন্দী ছিলেন যিনি বারবার ব্রিটিশকে মুচলেকার চিঠি লিখে আবেদন করে হাতে পায়ে ধরে বাইরে এসেছিলেন। অথচ আমরা জানি আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মুচলেকা দিয়ে মাথা নিচু করার ইতিহাস নয়, বাইরে আসার ইতিহাস নয়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গান্ধীজি, নেতাজি, বল্লভভাই প্যাটেলজি, আম্বেদকরজি এবং আমাদের রবীন্দ্র, নজরুল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রাসবিহারী বসু, বিনয় বাদল দীনেশ, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, লাল বাল পাল সহ সমস্ত, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সূর্য সেন সহ সমস্ত, বিনয় বাদল দীনেশ, ক্ষুদিরাম সকলের মাথা উঁচু করে থাকার ইতিহাস, মাথা না নোয়ানোর ইতিহাস, ফাঁসি কাঠে হাসতে হাসতে প্রাণ দেওয়ার ইতিহাস। How come? I started, it's impossible now. However, today our educationalists are forced to revisit history, rewrite history chapters, and discard the role and key figures just to please the current central government. I'm sorry to say. I hope this government doesn't doesn't force them revisit and edit the history of Sammakka, Sarakka, the legendary mother-daughter duo who passionately battled for the welfare of their community. যাই হোক, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিগুলিতে বিশাল সংখ্যক শূন্য পদের মধ্যে যা আজকের দিনে 12,860টি পজিশন, তার মধ্যে 62% এসসি, 63% এসটি, 61% ওবিসি আর 60% আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে, ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশনের জন্য। পাশাপাশি আরো দুর্ভাগ্যের যে পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় সরকার তেলেঙ্গানার এই ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছেন এর আগে, যেমন ওনারা ভুল তথ্য পার্লামেন্টে দিয়েই থাকেন, এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। কালকেই আমাদের এমপি সাকেত গোখেলের সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন আনসার জিএসটি কত ডিউ আছে তার উত্তরে এমওএস, সম্মানীয় এমওএস বলেছিলেন ফিনান্সের কোনো জিএসটি ডিউ নেই কোনো রাজ্যে। আর স্বয়ং নির্মলা সীতারামনজি, আমাদের অনারেবল ফিনান্স মিনিস্টার, তিনি বলেছেন বাংলার 19-20, 20-21, 21-22 এবং এর জিএসটি ডিউ আছে এবং সেই জন্যে জিএসটির এজি সার্টিফিকেট পাননি বলে জিএসটি কম্পেনসেশন ডিউ আছে। অথচ আমি বাইরে গিয়ে তখনই আমাদের বাংলার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর কাছ থেকে খবর নিয়েছি, যেটা আমার কাছে এখানে আপডেটেড আছে, ফোনে আমি কপিও দিয়ে দিতে পারি, যে 19-20, 20-21, 21-22 জিএসটি এজি সার্টিফিকেট আমাদের তরফ থেকে দেওয়া আছে বরাবর, বাকি নেই, এবং সেটা দেওয়া হয়নি বলে জিএসটি ডিউ, এই যুক্তি সঠিক নয়। However,
However, yeah, I will authenticate. Don't worry, I will authenticate. I have the paper. Don't disturb us. একইভাবে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, একইভাবে সংসদে এনারা একদিন বলেছিলেন রাজ্য সরকার, তেলেঙ্গানা রাজ্য সরকার নাকি এই ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটির জন্য প্রপোজালই দেয়নি, অথচ তেলেঙ্গানা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার শ্রীমতী সত্যবতী রাঠোর পাবলিকলি জানিয়েছেন যে রাজ্য সরকার, ওনাদের রাজ্য সরকার সেই 2017 সালে 170 একর জমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ করেছেন। এভাবে এই সংসদে এই ঐতিহ্যের পীঠস্থানকে, এই গণতন্ত্রের আধারকে, এই সম্মানীয় সংসদকে অসম্মান করার জন্য আমরা মর্মাহত। We say that this government has made a mockery of the parliament. It also appears that the Modi government is willing to stop the welfare of the people. যেমন তার উদাহরণ হিসেবে আমি বলতে চাই, আমাদের বাংলার কোন খাতে কত পাওনা, 100 দিনের কাজে 6561 কোটি, আবাস যোজনায় 9329 কোটি, স্বচ্ছ ভারত মিশনে 344 কোটি, মিড ডে মিলে 174 কোটি, বুলবুল ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিপূরণ 6334 কোটি, ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিপূরণ 4022 কোটি, মোট 1,09,68 কোটি। এটা কোনো ফেডারালিজমেরও উদাহরণ নয়, পার্লামেন্টকে সম্মান করারও উদাহরণ নয়। আর কিছু পরিসংখ্যান আমি দিতে চাই, যেরকম আইআইটি আইআইএম এ 13,600, প্লিজ স্পেয়ার মি ফর 1 মিনিট অ্যাট লিস্ট। 13,626 স্টুডেন্টের মধ্যে এসসি এসটি ওবিসি যারা প্রেস্টিজিয়াস এই আইআইটি আইআইএম এ পড়েন, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, তাদের মধ্যে 35,000 স্টুডেন্ট সুইসাইড করেছেন 19-21 বছরের মধ্যে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে মোদি জমানার কোনো সম্মানের উদাহরণ নয়। আমি এটা বলবো যে 2014 সালে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের এক্সপেন্ডিচার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সেক্টরে ছিল 0.63% অফ দ্য জিডিপি, যেটা 21-22 হয়েছে 0.34% অফ দ্য জিডিপি এবং 23-24 হয়েছে 0.37% অফ দ্য জিডিপি। এটাও খুব খারাপ। আমি শেষ করব একটা কথা বলে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির মধ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যেটা ইউনেস্কো তাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বলে উদাহরণ দিয়েছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয় যেটা রবীন্দ্রনাথ নিজের সমস্ত পুঁজি দিয়ে, নিজের সমস্ত প্যাশন দিয়ে তৈরি করেছিলেন। প্লিজ এটা আমাকে শেষ করতে এক লাইন। সেই রবীন্দ্রনাথের সেই বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে রবীন্দ্রনাথের নাম সরিয়ে, ফলক সরিয়ে মোদিজি এবং উপাধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে, যদিও পরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওটাকে রেকটিফাই করেছেন, কিন্তু তবুও এটা অত্যন্ত ভুল, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং যেভাবে আনডেমোক্রেটিক্যালি এটা করা হয়েছে এই ডেমোক্রেসির বিষয়ে আমি বলতে চাই সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি Nothing will go on record now. Nothing will go on record. Thank you. Please, Honorable Minister, please take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. We have the benefit of the Honorable Minister Dharmendra Pradhanji here. The Honorable Member has indicated that the spending in education as per our GDP indicator was 0.6, now it is 0.3. That's what the Honorable Member has said. Answer it again right now, or I can answer that during my answer. Yes. Can I? Yes, please. Sir, yes, last during my discussion at Lok Sabha, if facts are through budget document I am quoting, in 13-14, the expenditure on education, the GDP wise, if you calculate, this was 3.84. 3.84. Gross expenditure on education of the GDP is 3.84, which is today in 2021 is 4.64. There's a 0.80, around 1% growth is there. I don't know why, from where my sister Dola has quoted all these things. Honorable Member, you had indicated in your address, which I had the occasion to listen as translated, that GDP investment as per GDP, 0.6 was there earlier, now 0.3. Honorable Minister says
At the moment, it is 15 times what you have asserted. He says 4.6% of the GDP. I therefore would urge you to authenticate it. Yes, I get it. You are a senior member. You are a very senior member. And second, my suggestion, you spoke in Bengali and eloquently, fluently. But since there was no advance notice, Secretariat took 2 minutes to translate. We would love to have any language to be used, but a little advance notice will help the Secretariat. But I could understand all you said. It was very well translated. So you'll do it during course of the day or tomorrow? Tomorrow. Sri Sanjeev Arora, not present. Sri Mujibullah Khan, not present. सर हूँ सर सर यहाँ हूँ सर I'm so sorry, such a smart face I couldn't notice. मेरा दुर्भाग्य है सर आप मुझे देखे नहीं You'll get one minute extra. थैंक यू वेरी मच सर धन्यवाद सर Your time is 5 minutes, सर now 6 minutes. थैंक यू सर थैंक यू Go ahead. वेरी मच आज आपने बोलने का मौका दिया है इसलिए मैं आभारी हूं सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल ये बिल आज जिन्होंने पेश किया उनके बारे में थोड़ा भी नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा वो हमारे उड़ीसा के एक युवा नेता है जो भारतवर्ष में आज शिक्षा जैसे एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं मैं एक उड़ीसा का लड़का होने के नाते मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूं कि हमारा राज्य का एक लड़का आज सारा देश में शिक्षा को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है सर Once again, honorable member, सर लड़के की उम्र क्या है? वो भी कम है मैं भी कम हूं सर Let me tell you. सर नहीं. सर एक बात बताऊं सर प्लीज एक बात बताऊं No, I know it. सर The honorable minister is very passionate about education ecosystem. Very, very passionate about it. And that is evidenced by his thorough preparation while responding to questions. सर He responds to questions which are beyond the normal question. Sir, Go sir. ahead. Sir, that Umar issue is left to be decided appropriately in some other case. नहीं सर मैं उम्र का बात इसलिए बोलना चाहता हूं कि जो फिल्म लाइन में रहते हैं सर उन लोग उम्र कभी नहीं बताते भले आप कागज में देख के जान लो लेकिन हम अपने मुंह से कभी नहीं बोलते तो सर ये जो अमेंडमेंट बिल आया है आदिवासी यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं 90 दशक में क्योंकि एक मैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से आता हूं सर मेरा अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट का नाम था कोरापुट जिसमें खाली ट्राइबल ज्यादा है उस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों के विकास के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बिजू पटनायक जी ने 13 जिला से 30 जिला किया उसका मतलब हमारे जिला को 4 जिला में डिवाइड किया इसलिए कि काफी दूर तक उसका बाउंड्री लाइन था कोई भी जिला कलेक्टर को पहुंचने में काफी समय लगता था लोग न्याय नहीं पाते थे आदिवासी न्याय नहीं पाते थे इसीलिए माननीय उस टाइम के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक जी ने 13 से 30 जिला करके आदिवासी लोगों को न्याय दिया आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री जनजाति मिशन एक मिशन घोषणा किए हैं जिसके तहत 22 आईटीडीए ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी जो है हमारे उड़ीसा में उसके थ्रू से 500 करोड़ रुपया आदिवासियों को विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री दिए हैं स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर आदिवासी ओनली पहले 9 जिला हुआ करता था आदिवासी जिला अब माननीय मुख्यमंत्री जहां थोड़े बहुत आदिवासी हैं उसको भी उनका डेवलपमेंट के लिए भी और 14 जिला शामिल किए जिसके वजह से आज 23 जिला में
हमारे उड़ीसा में 30 से 23 जिला में आदिवासियों के लिए काम हो रहा है और करीब करीब 600 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री दिए हैं आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि जब छोटा सा गांव रहता है, गांव में जो ठाकुरानी बोलते हैं, हमारे जो गांव की देवी रहती है, उनका छोटा सा मंदिर रहता है। ऐसे हर गांव में अलग अलग देवियों को पूजा किया जाता है आदिवासी समाज में। वो मंदिर को कैसा ठीक ठाक से उन लोग ठीक से बना सके, ठीक से उसको पूजा कर सके, इसीलिए ये जो 600 करोड़ दिया गया है आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए, खास करके उनके जो वाद्य यंत्र रहता है जो कि धीरे धीरे लुप्त होने जा रहा था, वो वाद्य यंत्र कैसा आदिवासी लोग फिर से अपना ठीक ठाक रखें और अपना परंपरा को कैसा निभाए, इसी के कारण 600 करोड़ रुपया आज माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दिए हैं। इसीलिए मैं नवीन बाबू का आभारी हूं। 2023 में ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। अभी थोड़ा देर पहले माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ तब उसको तेलंगाना में एक आदिवासी ट्राइबल यूनिवर्सिटी करने का वहां वादा किया गया था, उसी के जरिए से आज हुआ, जिनका नाम वो आदिवासी जो यूनिवर्सिटी होगा उसका नाम है समक्का सारका, जो कि आदिवासियों के लिए बहुत काम किए थे, आदिवासियों के लिए बहुत लड़ाई किए थे। सर अगर ये यूनिवर्सिटी होता है तो आदिवासियों का जरूर डेवलपमेंट होगा। हमारे उड़ीसा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस यूनिवर्सिटी को भी जो कमियां हैं, वो खुद गए थे वो यूनिवर्सिटी में, वो घूम के देख के भी आए हैं, जो कमियां हैं वो कमियां पूरा करने के वो कोशिश करेंगे, उम्मीद मैं करता हूं। सर उड़ीसा में 22% आदिवासी है और भारतवर्ष के हिसाब में देखा जाए तो थर्ड हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन उड़ीसा में है, जो आदिवासियों का पॉपुलेशन है। इसीलिए हम लोगों का डिमांड है, उड़ीसा का डिमांड है कि उड़ीसा में भी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। और माननीय मंत्री, इसलिए मैं ज्यादा उम्मीद रखता हूं कि माननीय मंत्री उड़ीसा से हैं, इसीलिए जरूर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में होगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में जितना कोई भी जिला में, जिस जिला में ज्यादा पॉपुलेशन हो आदिवासियों का, उस जिला में एक यूनिवर्सिटी। इसलिए आज मैं यूनिवर्सिटी बिल को पूर्ण समर्थन करता हूं, उम्मीद करता हूं कि उड़ीसा में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने आदिवासियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्री ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोजीशन। सर मैं माफी चाहता हूं कि इस सदन में जो सिक्योरिटी का और लोकसभा में जो 2 लोग घुस के वहां पर गड़बड़ किए, उस वक्त यहाँ पर भी उसका आवाज उठाया गया था, लेकिन आपने सदन चलने के लिए अनुमति दी। लेकिन जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि इतने बड़े सिक्योरिटी में कैसा 2 लोग अंदर आकर वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच करके उन्होंने पूरा, जैसा कि एक सेकंड प्लीज, I'll give you एक सेकंड। The moment I came to know about it, I called the director of security. I told him to give me an update. The update which he gave me at that point of time, I have shared with the House. It is a matter of concern, but let us await full details, and then I think we'll be able to reflect. then a question, I indicated to the members after getting authentic input that the intruders were arrested, the matter is being looked into. Let us give some time. no time, यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे, तो गैस वहां पर छेड़े,
इससे पहले भी ऐसा गड़बड़ एक बार हुआ था ना। ये जो है ये सिक्योरिटी I ब्रीच had indicated आज ही हम मनाए the हैं। matter is being examined आज ही forthwith. शहीद दिवस आज ही मनाए हैं। शहीद दिवस आज ही Nothing मनाए will go on हैं record. और आज ऐसा होगा। No, nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, nothing will. No, nothing will go on record because I had said, once again, Honorable LOP, I need to indicate to Honorable LOP that in this house, I had informed, I will apprise the result before we rise for the day. Wait for that. No, nothing will go on record. Nothing will go on record. Mr. Jairam Ramesh, do you want to say on the bill? Mr. Vivek Thakur. Mr. Vivek Thakur, nothing else will go on record. No, sir. I had indicated, I take it very seriously. We आदरणीय cannot have सभापति any महोदय, other. मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। Mr. केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 Nothing will go on record. आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। आदरणीय सभापति महोदय, ये विधेयक आंध्र और तेलंगाना के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। Nothing else will go on record. 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल के माध्यम से जो वादा किया गया था उसकी पूर्ति यही बिल करता है, We'll have जो discussion. आज तक किसी Sir, ने नहीं, we इन्होंने will भी have कभी this. नहीं किया। Nothing will go on record. Nothing. यह विधेयक आदरणीय Nothing will go on प्रधानमंत्री record. जी के आश्वासन की पूर्ति का Yes. विधेयक है। Only what Mr. Vivek Thakur says will go on record. उन्होंने जो वादा आंध्र और तेलंगाना की जनता से किया था उसी वादे की पूर्ति हेतु 2018 में आंध्रा में और आज इस बिल के माध्यम से तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए तो इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, इस विधेयक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी का नाम आदिवासी समुदाय के देवता सम्मक्का और सरक्का के नाम पर रखकर हमारी सरकार ने आदिवासी समुदाय को जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सभापति जी, 1835 की मैकॉले की शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता पर आधारित है और उसमें शिक्षा में भारतीयता का कोई भी समावेश नहीं था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया इनके द्वारा। 1 second, Mr. Thakur, please take your seat. This is not a place to shout slogans. No. This is not a place to shout slogans. Please take your seat. Take your seat, all of you. Take your seat first. I urge the honorable members to take your seat first. Shouting slogans doesn't be over, sir. We have to be serious-minded people. Nothing else will go on record, sir. Nothing will go on record. We have to set an example. Sir. No, sir. No, sir. Please, first, sit down. Sit. Sir, एक सेकंड, would you take your seat first, please? एक बार बैठिए, please. Sir, please take your seat. Nothing is going on record. No. Nothing is going on record. No. Please take your seat first. Take your seat first. Take your seat, sir. When you take your seat, everyone will take. Or sir, when you are standing, others should sit at least. Sir. No. Sir, I would urge the honorable members first to take their seats. Take your seats. Take your seats.
Please take your seats. We need not monetize every situation politically. It's a security issue. No, no, sir. Please take your seat. No, nothing will go on record. Mr. Thakur, please continue. आदरणीय सभापति जी, 1835 की मैकॉले की शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता पर आधारित थी और उसमें शिक्षा में भारतीयता का कोई भी समावेश नहीं था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी इनके द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का नतीजा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसने इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के महत्व को समझा और समाहित किया। ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी ट्राइबल आर्ट, हेरिटेज, कल्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च को बढ़ावा देकर एनईपी 2020 के महत्वपूर्ण भाग इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय के पास पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। आदरणीय सभापति महोदय, एनईपी 2020 का महत्वपूर्ण उद्देश्य हायर एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस है। महोदय, 2014 से पूर्व आदिवासी समुदाय में उच्च शिक्षा का स्तर बहुत कम था, जिसका मुख्य कारण स्थानीय भाषा में उच्च शिक्षा का उपलब्ध ना होना यही कारण था। परंतु हमारी सरकार बनने के बाद इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन AISHE में स्पष्ट दिखा कि जिससे यह सिद्ध हुआ कि आदिवासी समुदाय में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 2014 के मुकाबले 2020-21 में 47% की बढ़ोतरी हुई है और आदिवासी महिलाओं में यह बढ़ोतरी 63.4% की थी। और हमें यह विश्वास है कि यह ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदिवासी भाषाओं के विकास और आदिवासी स्थानीय भाषा में Mr. Thakur, honorable member, one second. That's not the way to shout. Sloganeering, shouting, does it behove us? Or take your seat. I have to make an announcement. Take your seat. Sir, I care for your health. Please, promote it. Take your seat. I have to make an announcement. I'll make the announcement once you take your seats. Please do that. Sir, Lok Sabha is functioning at the moment in good environment, transacting legislative business. I had indicated to the honorable members that after I came to gather details of it, I called the Director Security. He gave me an update which I have shared with the honorable members. The update was that the intruders had been apprehended. And one second. You have larger responsibilities. Take your 1 second. And I had indicated to the House, before we rise for the day, I will come up with a comprehensive statement. Now that chamber is functioning well, transacting business. We, the elders, the upper house, I will continue with the legislative business and keep up my word of coming back to the House during course of the day about the developments that have taken place. Every member of the House is concerned. It is not this side or that side or this side. We are serious enough, but we don't have to create a situation. No, sorry. Mr. Thakur, please continue. अपति महोदय, Okay, no, sir. ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदिवासी I भाषाओं के can't say more विकास than this. और Please. आदिवासी स्थानीय भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान कर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के आंकड़े में और अधिक बढ़ोतरी करेगा। मेरे विपक्ष के साथी और खास Nothing will करके go on मेरे record, मित्र मनोज झा अक्सर शिक्षा के निजीकरण का मुद्दा उठाते हैं। शायद मैकॉले की शिक्षा की रूपरेखा उन्हें ज्यादा पसंद है। उन्हें भी मैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के एक आंकड़े से अवगत कराना चाहूंगा। The government universities that constitute 59.1% of total universities contribute 73.1% of total enrollment of students.
whereas private universities that constitute 40% of the total higher education institutions account for only 26.3% of the total enrollment. अब बताएं कि कहां है प्राइवेटाइजेशन का जिन। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार बनने के बाद हायर एजुकेशन में क्या अंतर आया है, उसकी एक बानगी आपके सामने रखना चाहूंगा। The total enrollment in higher education has increased to nearly 4.14 crore in 2021. Since 2014-15, there has been an increase of 21% in enrollment. Female enrollment has increased by 28% since 2014-15. The percentage of female enrollment to total enrollment has increased from 45% in 14-15 to around 49% in 2021. The gross enrollment ratio has increased to 27.3 from 25.6 in 2019-20. आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद से देश में 6 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले हैं, 7 नए IIMs खुले हैं, 7 नए IITs खुले हैं, 15 एम्स खुले हैं, 209 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और 320 नए विश्वविद्यालय और 5,709 नए कॉलेज खोले गए। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये AISHE के। सभापति महोदय, मैं अंत में माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा मांग यही रखता हूं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और ड्यूअल डिग्री की बात हो रही है, तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी के साथ भी फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन हो, जिससे फॉरेन स्टूडेंट्स इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को जान सके और हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे भी फॉरेन यूनिवर्सिटी का लाभ ले सके। मुझे तो यही कहना है सभापति महोदय कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होता है। अंत में मैं अपने आदिवासी समुदाय के बच्चों से वही कहना चाहता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और उसका हम सब अनुसरण करें कि यही समय है, सही समय है, भारत का यह अनमोल समय है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री जयराम रमेश, श्री संजीव अरोड़ा, श्री अयोध्या रामी रेड्डी अल्लाह। Thank you, Honorable Chairman Sir, for allowing me to share my thoughts on the proposed Central Amendment Bill 2023, which seeks to establish a central university, tribal university in Telangana, named as Samakka Saraka Central Tribal University. Sir, we fully support this bill. I have few of my observations regarding this bill, sir. Sir, I would like to bring it to your kind attention that around 30% of teaching vacancies in 45 central universities remain vacant. According to RTI, approximately 5,800 teaching posts are lying vacant among the 19,000 sanctioned teaching posts. The number of vacancies becomes much higher, crossing over 10,000 when the vacancies of IITs and IIMs are also included. Sir, even in Andhra Pradesh, as of August 23, the Central University of AP has only 19 out of the 25 sanctioned posts that are filled. As per the CGC information, it is a fairly new campus and typically it takes 3 to 5 years to be operational, but even after 5 years, still vacancies remain and also a lot of infrastructure also need to be upgraded. This becomes a concern in the Indian higher education landscape, impedes the delivery of quality education and creating cutting-edge knowledge and innovative solutions, undermining the India's academic competitiveness on a worldwide scale. So our suggestion to the minister, sir, I think infrastructure in the higher education areas must be improved. Also, there is a very less spending on the
research side. Higher education institutions in India face a significant issue in terms of lack of research input. This constraint limits their potential to function as a dynamic hubs of innovation and intellectual advancement. Also, in addition to engineering and technology, the most prolific fields of research in the country is with the most The of the Honorable LOP contributions has by held the floor. institutions of eminence. I have responded to that. Reiteration wouldn't make a difference. I would come back Sir, during course of the day. Sir, there is a need for devoting more efforts and funding After towards guaranteeing the dissemination of such high-quality research across higher education institutions in the country, One with a second. deliberate focus on impactful and patient research. Honorable member, Sir, 10 seconds more. Sir, I only want to say that outdated curriculum is seconds. there, need to be improved. Enrollment in higher education need to be looked at. Inadequate fund allocation for R&D need to be looked at. And with all this, we recommend, we support this bill, but under AP Reorganization Act, there are still lot of issues that are pending, sir. We request the Honorable Minister and the Government of India to kindly look into and implement all the assurances that were made on the House under the AP Reorganization Act. Thank you, sir. Thank you. Sri B. Lingya Yadav. Yes, go ahead. One second. Sir. One second. All of you take your seat. Only the honorable, please. Take The your seat. central- Take your seat. Only the honorable leader of the opposition. Yes, sir. सर Sir, मैं before you speak, sir, आपका what I had indicated may kindly be noticed. you I had said with the promptitude, without loss sir of you are time. very good but government is not good. Sir, What can I? Sir. They are not even cooperating you. sir, You see, sir, after 3 years, what will happen? Sir, it is legislature. Sir, It I is am telling our the truth. problem. The government is away I from am it at the telling the moment. truth. It is our They issue. will not take your cooperation, sir. They will not listen to you. Sir, That's I why can you tell listen to us. I can never match your experience. No. I can never match your experience, sir. I know, sir, you will start and then come to the same issue I have responded. Everyone knows it, sir. No. Now, with this seniority, No. See? I can't advise you, sir. No. I can only suggest. No. Anybody can advise me. No. That's why I am here. So, 1 minute. आपको सब एक ही में, क्योंकि ये मामला उस हाउस का रहे तो भी ये दोनों एडजेसेंट बिल्डिंग है. उसकी जब They are उसको functioning. नहीं They are transacting उसको business. अगर आग लगी सर उसको अगर आग लगी इसको भी आग लगता है. वहाँ अर्जेंट हो गया और आप होम मिनिस्टर आने के बाद एक स्टेटमेंट दिलाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो ये One second. When Honorable LOP and I see in Mr. Mallikarjun Kharge beyond the status of LOP, not that he's president of a party. Apart from that, he has a huge experience. He has seen many things. My appeal to you, sir, is my appeal to the leader of the opposition is that I have shared the input with the House. I called the Director Security. He said they have been apprehended. They are looking into the matter. I have that's directed. why sir sufficient information not came. That's why the Lok Sabha adjourned. Sir, Therefore, we request you kindly adjourn. Let Home Minister come and let us see give what the he has to say. details. And Let us see sir, what leader of the House has to say. 1 second, sir. Yeah. बात है जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का रवैया है वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब Nothing has been देश gone की record except अखंडता और प्रभुता के लिए एक साथ खड़े हैं. जो लोकसभा में भी एक्शन हुआ वो उन्हीं के कारण उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया. मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है
हमने एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। मेरा अनुरोध है माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के लिए वेट करना चाहिए हमने और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चालू रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन, बाकी बैठिए। You see, 1 second. It is an issue where we should deliberate in all seriousness and in a composed atmosphere. Leader of the House has said something. It is not necessary for everyone to subscribe to it. There can be other point of view. Honorable Leader. सर देखो मैं इस सर Sir, if leader of the opposition is on legs and you still wish to speak, सर इस सदन के I would appeal to the honorable members. Let us show minimum regard to rules. If leader of the opposition is on his legs, let him alone respond. सर I fully believe in his wisdom. No one can question his credentials. So let us hear him in rapt attention. And then I will seek response of the treasury benches also. Please, sir. सर इस सदन के नेता ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और अपोजिशन के लोग देश के लिए यहाँ जिन लोगों का पहले जो शहीद हुए थे उनको तो श्रद्धांजलि सब मिलके ही किए और देश के यूनिटी के लिए और देश के हिफाजत के लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमारे लोग जितना सैक्रिफाइस किए तुम्हारे पास एक चूहा भी नहीं। सर 130 करोड़ लोग तैयार हैं। सुने There is no soul in the country who is not ready. ये हमको सिखाते 130 करोड़ जनता ये तैयार है इसके हमको लिए। सिखाते हैं देशभक्ति, ये हमको सिखाते We have हैं to देशभक्ति। exemplify. ये तो देश के विरोधी लोग No, हैं। sir. Nothing will go on record now, sir. Nothing will go on record. Nothing will go on record. I now call upon Sri B. Linga Yadav. Please resume your address. Please resume your address. Sir, the Central Universities Amendment Bill 2023, sir. The bill established a Central Tribal University in Telangana. It will be named the Sammakka Sarakka Central Tribal University, sir. Its territorial jurisdiction will extend to Telangana, sir. It will provide avenue of higher education and research facilities, primary for the tribal population of India, sir. It is Andhra Pradesh Rehabilitation Act 2014 provide that the central government will establish tribal university, sir, in our Telangana state, sir. ये बहुत I talk Telugu, sir. ఇది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయమే. మరి మా తెలంగాణలో ఈ యొక్క ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసినందుకు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము అందరం కూడా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాం. కానీ ఈ యొక్క తెలంగాణ యూనివర్సిటీ మరి గత 10 సంవత్సరాల క్రితమే తెలంగాణ ఆవిర్భవించినప్పుడే ఏర్పాటు చేయవలసింది ఉండే. దురదృష్టం కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఆలస్యం చేసింది. ఇప్పటికైనా ఈ యొక్క గిరిజనుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతోటి మరి మేము కోరినటువంటి విధంగా ఈ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసినందుకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ యొక్క యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయడంలో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆనాడు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పాత్ర గణనీయంగా ఉంది. ముఖ్యమంత్రిగా వారు అనేక రిప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చారు. మా ఎంపీలను కూడా అనేక సార్లు పోరాడినామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ యూనివర్సిటీకి సమ్మక్క సారక్క పేర్లు పెట్టడం చాలా సంతోషం. మా దగ్గర గిరిజన వనదేవతల పేరు పెట్టారు కాబట్టి ఈ యూనివర్సిటీని సక్రమంగా భక్తిపూర్వకంగా నడిపించాలని కోరుతున్నాం. మరి మా యొక్క అనేక ఆ కాలంలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఈ ట్రైబల్స్ కు అనేక విధాలుగా మేము గవర్నమెంట్ లో చేసాం సార్. 10% రిజర్వేషన్ కానీ ఈ యొక్క గ్రామ పంచాయతీలో తండాలుగా చేయటం కానీ అందుకని రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ కోసం
నిధులు కూడా వెచ్చించాలి సార్. 1 మినిట్ సార్. అట్లనే ఈ యొక్క ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి క్లాసులు కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు ఇచ్చిన ఇతర హామీలు కూడా దీంతో పాటు నెరవేర్చాలని చెప్పి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది సార్. ధన్యవాదాలు సార్. Professor Manoj Kumar Jha, not present. Dr. V. Sivadasan, not present. Sri Abdul Wahab, not present. No present. I am very much here. No. After this. Hello, I am here. No. Very much present. I have noticed his presence. Yeah, I will tell, and after that I will walk out. After that I will walk out. See, No. I support. This is a support. I support the bill. Honorable member, I support the bill. honorable member, we are responsible members Yes, very much. of a very important August House. Yes, and You're very saying important I'll walk subject out. also. I can tell you, Yeah. my heart pains Yes. when some of the members, even when the house is in order, Hmm. they make their speech and walk out. No. It is our minimum duty Okay, I to will listen to others also. Okay, I'll be here. You enlighten us and get enlightened also. Okay, sir. You have, sir, Yeah, Honorable Chairman Saab, 2 minutes. 1 minute is enough. Okay. I am supporting this bill. In the central university, don't make like our Kerala universities. What is happening here, both in central and in state, it's all politicizing. So students are going out. Students are going to different universities in different part of the world. That is continuing every month, every year. Thousands of students are fleeing from here. Why? Because the universities are now completely politicized, either BJP or our government also. Now in Kerala, what is happening is the governor and the state government, being the chancellor, he is using his power. Being the government, they are using their powers. It should not happen in central universities also. Our expectation is at least the north, in Delhi and all, university should function for Keralites also. So everywhere it is politicizing, nepotism going on. So ask our Mantriji, don't politicize these universities. It is the university is only our hope for our youth, for the employment and all. Please make use of this university and give more skill development in universities, skill development courses also. Thank you very much. Announcement by the chair. Honorable members, the copies of the bills, that is the Jammu and Kashmir Reorganization, Second Amendment Bill 2023, and the Government of Union Territories Amendment Bill 2023, both as passed by Lok Sabha, were circulated in the morning today. As the bills are to be taken up today, those honorable members who desire to give notices of amendments to the said bills may do so till 4 p.m. today. Briefly. भाग्य की बात है कि जब जब कोई ओबीसी का बिल आता है, कोई ट्राइबल वेलफेयर का बिल आता है, कोई ना कोई विषय बना के सदन को छोड़ के भाग जाते हैं। तेलंगाना के लोगों ने अभी अभी उनको चुन के भी सरकार दी और ये बड़ी महत्वपूर्ण ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में लगने जा रही है। ये समाज वर्षों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, उनको सही इज्जत मिले, उनको नए मौके मिले, नए एजुकेशन के लिए भी एवेन्यूज मिले। इसके लिए 10 साल से हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डिटेल में बताएंगे, लेकिन वर्षों वर्षों तक राज्य सरकार के पीछे पड़ने के बाद उन्होंने कई बार इसके लिए हमें परेशानी भी की, फिर भी केंद्र सरकार लगी रही और ये आज ये सुनहरा दिन है कि हम ये पास करने बैठे हैं। लेकिन जबकि लोकसभा में भी स्पष्ट कर दिया गया, इंक्वायरी हो रही है, डिटेल्स की हम प्रतीक्षा करें और देश को संदेश दें कि मिलके हम
एक मजबूत ताकत की तरह इस प्रकार की घटनाएं होने नहीं देंगे। आप सर, मैं मुंबई से आता हूं, जब कांग्रेस की शासन थी मुंबई महाराष्ट्र में और केंद्र में दोनों में, तब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों को सैकड़ों लोगों की जान गई, विदेश से टेररिस्ट आए, 4 दिन तक मुंबई हॉस्टेज था, लेकिन कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया। विपक्ष में हम बैठे थे तभी, उल्टे मुंबई अगले दिन, ये शाम को हुआ था, रात को अगले दिन ही हम काम पे लग गए और एक संदेशा दिया दुनिया को कि भारत में वो ताकत है और क्षमता है कि हम किसी भी प्रकार के हमले से डरते नहीं है, किसी भी प्रकार के घटना से हमारे ऊपर आंच नहीं आएगी, ये देश एक है। विपक्ष ने एक जिम्मेदारी का स्टैंड लिया था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे तो क्लियरली दिखता है कि ये एंटी ट्राइबल माइंडसेट दर्शाता है कि ट्राइबल का एक यूनिवर्सिटी का अच्छा बिल को हम समर्थन ना देना पड़े, हाउस में बैठ के वोट ना देना पड़े, हाउस में बैठ के सरकार के काम को समर्थन नहीं देने का एक एक्सक्यूज बना के, जबकि हाउस स्मूथली चल रहा था, तब जाके वॉकआउट करना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर वी शिवादासन, नॉट प्रेजेंट। श्री वी विजय साई रेड्डी, not present. Present. Sir, you are not on your seat and therefore not present for me. But the moment you occupy your seat, you are present for me and for everyone in the house. Your 2 minutes. Sir, this is Central University. Central University. 2 minutes. 1 minute is enough, sir. Sir, only one point I would like to bring to your notice, sir. We wholeheartedly support this bill on behalf of our party and this thing. So the only issue, sir, I wish to highlight the Honorable Education Minister is to the menace of temporary campuses, sir. Those institutions which have been promised to the state of Andhra Pradesh under the AP Reorganization Act have been, of course, fulfilled by the government and they have been established, but they have been established only in the temporary premises, sir. And these temporary premises are not enough to expand the courses or for undertaking any other activity in full-fledged manner, sir. Therefore, I request the Honorable Education Minister to open up the full-fledged campuses and permanent campuses and then maintain the standards of central universities. Sir. Thank you very much, sir. Thank you. Srimati Mahua Maji, not present. Shri Kanak Medra Ravindra Kumar. Sir, thank you, sir, for giving this opportunity. Sir, 2 minutes. Sir, I am from Andhra Pradesh relating to this subject. Kindly, you have been generous towards 2 minutes. giving 2 more minutes. 2 minutes. Let me say. This issue arose, sir, this is because of the Andhra Pradesh Reorganization Act, which dedicated 2 universities, one for Telangana and one for Andhra Pradesh. We are currently discussing regarding Telangana. Sir, I would like to brief history with regard to the Central Tribal University for Andhra Pradesh also. Sir, Telugu Desam Party was in power and Chandrababu Naidu was the chief minister at that time, from 2014. We have been strongly pursuing the central government for establishing the tribal university, and also the government handed over 525 acres. This compound was also constructed by spending state government funds, but it is not considered till today. And also, sir, but it's in the 16th Lok Sabha, and the edge of the bill was also moved, that was not passed, and subsequently another bill was moved, that was the, sir. Vijay Sai Reddy ji? No. Sir, The Honorable Minister interfering and disrupting is the house. alert. And when time will come, he will hold the floor. Sir, my friend Vijay Sai Reddy every time disrupting my speech. Your friendship is inscrutable for me. Sir, but now we passed the bill in this house, and we know that the site is ready.
and the central government has to take care of with regard to the Andhra Pradesh Tribal University also, sir. But coming to with the AP Reorganization Act, other promises are concerned, there are so many promises are unfulfilled. It has to be fulfilled within 10 years. Within 4 or 5 months, the time will also lapse. So with regard to the Polavaram project, it is a major. And also Amaravati capital city is also a major project. And also with regard to the allocating the funds and fulfilling the Polavaram project and Amaravati capital, the state government totally abandoned. That's why the central government has to take care of it and fulfill the promises with regard to the other promises are concerned. As far as the capital is concerned, for the last 4 years, the farmers are agitating for construction of a capital where the Honorable Prime Minister laid a foundation stone for the capital of Amaravati, that it has to be cultivated. It is a part of AP Reorganization Act. Doctor Similarly, M. after this Thambidurai, government, Thambidurai. Polavaram project is completely... Nothing will go on record now, sir. Dr. M. Thambidurai, 2 minutes. Thank you, Chairman, sir. Our Honorable Education Minister has brought the bill, Amendment Bill 2020-23, as proposed to amend the Principal Act 2009 so as to include Section 3G. The name of the university is Saraka Central Tribal University. Sir, and also territorial jurisdiction extending the whole of state Telangana. Why is the Telangana? Let it be throughout the India. It is because the tribal people are, many people are throughout the India. They can utilize it. For example, in Tamil Nadu also, Central University is in Tiruvarur. It is applicable to all, throughout the Indian people, they are coming. Therefore, second, sir, the major objective of the university is higher education research. That is the important. Nowadays, the university is not concentrating research. They are only selling degrees. What is going on? Especially, I'm telling private and deemed universities, not I'm telling about state universities, government universities or central universities. I request the Honorable Minister to take care of recent notification given by the AICT. AICT has given notification. They are going to allow more sections if their facilities are there. But already many engineering colleges, affiliating colleges, closing stage. Therefore, why this monopolizing some section of people, that notification is coming. Therefore, I request Honorable Minister to take care of that this kind of AICT notification, misleading and affecting the research and other facilities. University's objective is, sir, I am an academician, I am professor, so I want, allow me or not. Sir, you are more than an academician. Sir, research, I'm saying research. No, you are more than an academician. No. Research and is the more important universities. The affiliating colleges, they are conducting courses. But at recent, what the AICT is given notification, allowing more sections if the facilities available, already existing engineering closing stage. Then how the other colleges come? Some colleges are monopolizing, some deemed universities are monopolizing, some state private universities monopolizing. All the state other institutions going to suffer. Therefore, this serious thing. But sir, I was professor in teaching in Anna University, Gandhi Engineering College, 3 years. That Anna University, for example, mechanical 2 sections only till now, 150 years old. Computer is 2 sections. But if the private university take, they have 20 sections, 30 sections. Sir, you made your point. Like that, AICT is also a part of the game. This Nothing will go to court now. Sri Javed Ali Khan, not present. Sri Santosh Kumar P, not present. Srimati Vandana Chavan, not present. Sri Sadanand Seth Tanavde. Thank you, Chairman, sir. I stand to support the bill aimed to amend the Central Universities Act 2009, which is to be empower and establish central universities for teaching and research in various area states. The bill is welcome as it seeks establish a central tribal universities in Telangana and also will provide avenues of higher education and research facilities primarily for the tribal population of India. This bill contemplates to impart quality education to the students to make them employable, as also will improve the quality of education in the country.
Over past many decades, the backlog to fill up the vacancies reserved for a privilege has been increasing. This bill will provide needed support to bring in more SCs and STs in higher education systems and universities. I also support the bill for it will help fulfill the regional aspiration and regional distinctiveness. At this juncture, I would humbly request respected Prime Minister Modi ji to consider setting up of center-sponsored international sports university in Goa to include programs in physical education, sports, sports event management, and sports medicine in the state of Goa. The necessary infrastructure created by the Goa government for successfully hosting Lusophonia Games and the national games also will put to better usage. The proposal in the bill to convert the National Rail and Transportation Institute, Vadodara, a deemed university, to the Gati Shakti Vishwavidyalaya. It is in the tune with Gati Shakti initiative and the vision of national logistic policy and deserves a big welcome. Overall, the intention and action of the Modi government seems to be perfectly uncertain with the aspiration of general public and in tune with the requirement of time. On my personal behalf and the Goa state I represent, we stand firmly in support of the bill. Thank you, Chairman. Honorable Minister Shri Arjun Munda ji. माननीय सभापति महोदय, आज माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा तेलंगाना राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है, जिनका नाम समाका सराका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया के मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वास्तविक रूप से जिन बातों का उल्लेख तत्कालीन प्रधानमंत्री देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वह वास्तविक रूप से दुनिया के सामने उभर रहा है। इस बात का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि समाका सराका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय न केवल उसका एक उदाहरण है, बल्कि उसके साथ इस बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी में यह पहला अवसर है देश के आज़ादी के बाद एक महिला राष्ट्रपति जनजातीय परिवार से भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित करते हुए यह संदेश दे रहा है कि भारत किस तरीके से अपना प्रगति को सुनिश्चित करना चाहता है। वंचितों की बात, जनजाति, आदिवासी, दलित, इन सारे समुदायों की बात बहुत हुई, पर उसे उभारने और उभरने की बात मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में न केवल इस बात के लिए कि जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, देश में सर्वोच्च पद पर जनजातीय महिला के रूप में राष्ट्रपति विद्यमान है, बल्कि इस रूप में कि हम वहां से प्रारंभ कर रहे हैं यात्रा 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, जो सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे हुए लोग। और आज हमारे सामने है कि ऐसे ऐसे योजनाएं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम
ऐसे ऐसे अध्यादेश और ऐसे विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके माध्यम से ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम भारत को इस अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में कहां ले जाना चाहते हैं। वास्तविक रूप से यह देश के सामने प्रतिबिंब हो रहा है कि वैसे सारे लोगों को आगे लेकर चलते हुए हमें देश की प्रगति करनी, और इसलिए आज दिखाई दे रहा है कि 10वीं अर्थव्यवस्था से भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके एक नया स्थान, नया कीर्तिमान स्थापित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमारे जो 4 पिलर्स है वो कम्युनिटी विहीन, जाति विहीन, बल्कि हमारा आधार स्तंभ हो जिसमें हम इस बात को सुनिश्चित कर सके कि युवा एक हमारी शक्ति है, महिला एक हमारी शक्ति है, किसान हमारी शक्ति है। महोदय, मैं थोड़ा सा और समय आपका। इसी तरीके से आज इतिहास इस बात का है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पहली बार आजादी के बाद 75 साल में आदिवासी परिवार का सदस्य कृषि मंत्रालय के रूप में इस सदन में कृषि मंत्री का दायित्व निभाया। अभी आपने देखा होगा कि जनता ने नया जनादेश दिया 3 प्रदेशों में। उस प्रदेश में विष्णुदेव साय जैसे एक साधारण परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। आज उसका शपथ ग्रहण संपन्न हो रहा है। मैं सदन के तरफ से भी मैं वैसे माननीय मुख्यमंत्री को आगे इस राज्य में छत्तीसगढ़ में 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए उसकी प्रमुख भूमिका होगी, ऐसा मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, इसके साथ साथ ही जहां हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उस शिक्षा को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि तमाम जनजाति क्षेत्र के जनजाति समुदायों के विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है, बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के लिए वो इन सारे विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे। वहीं बुनियादी ढांचा को भी मजबूत करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे 740 पूरे देश भर में विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन सारे विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर देने के लिए खोला जा रहा है। इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के लिए हमने सारे विश्वविद्यालय में न केवल देश भर के तकनीकी प्रबंधन तमाम तरह के जो शिक्षण संस्थान है, इसके अलावा ओवरसीज में भी पढ़ने वाले ऐसे मेधावी छात्रों के लिए हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। और देश भर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की कोई कठिनाई, उसकी मानक को हमने इस तरीके से बनाया है। थैंक यू ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। छात्र को नया अवसर मिले और युवा शक्ति देश में उभर करके सामने आए, जनजाति समाज को नया अवसर मिले। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रशांतानंदा जी, sir, 2 minutes. Your floor leader had made a very special request. Thank you very much, sir. नहीं सर, ये समय देने का काम तो मुझ पर ही छोड़िए। मतलब एक कहा गया ना, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपसी बात है। I take no note of it. Thank you for giving me an opportunity. Whether it is 2 minutes or 1 minute doesn't matter, but I thank you for that. Sir, while supporting this bill, I'm proud to say that the curriculums which are there, which I've read, if it goes
then it will be a game changer for the tribal youth. There is no doubt about it. And due to the paucity of the time, I can't discuss about the curriculum. So here I would like to draw the kind attention of Honorable Minister who is present here in the House that there is a central university there in Koraput, which is tribal district, we can say. And that there are some problems which I would like to draw his kind attention. Sir, you'll be knowing that there is Central University in Jaipur, Koraput, where sanctioned professor posts are 43, only one professor has been appointed, 42 professor posts are vacant. Sir, 88 sanctioned assistant professor posts, only 15 assistant professors posted. Sir, 73 assistant posts are vacant. Total out of 154 posts, 134 posts are vacant. Out of 119 posts for staff posting, only 26 have been posted. In the university, the total students are 917. Much of them are tribals only. So whether it is a tribal university or an university in a tribal district means the same for me, because we are thinking of tribal people. And with this kind of paucity, with this kind of vacancy in those university, what will be the future of these students who are reading in this university? I am requesting Honorable Minister to clarify why this is happening, and I am definitely hopeful that the university which is being now announced in this bill for Telangana, Thank you, sir. I definitely welcome it. And here I would like to request him that in just only 10 seconds, sir. Sir, uh, sir, and Odisha has the third highest tribal population in India, and the tribal population comprises 22% of the total state's population. We have been raising the demand for a satellite center of the Central Tribal University in Odisha, and that is my request, and with importance to this particular. Shri Dharmendra Pradhan to reply the discussion. धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की एक अवसर दिया। सदन ने भी कुल 12 माननीय सदस्यों ने आपकी अनुमति से इस डोला सेन जी से लेकर प्रशांत नंदन जी तक, बीच में आदरणीय जनजाति विकास विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने, सभी ने इस बिल को समर्थन किया और इस महत्व उद्देश्य आंध्र रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो प्रतिबद्धता थी सरकार की, एक यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र और तेलंगाना में बने। तेलंगाना, आंध्र में तो बन चुकी है, उसकी कैंपस भी शुरू हो गई है। अभी वहां की स्थायी कैंपस के लिए हमने प्रारंभ में कहा कि उसकी फाउंडेशन स्टोन देने का हमें अवसर मिला, सौभाग्य मिला। वैसे ही तेलंगाना सरकार के अगर सही समय में सहयोग होता तब ये यूनिवर्सिटी अभी तक रूप ले चुका होता। उन्होंने लंबे समय तक लैंड देने में विलंब किया, इसलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देरी हुई, लेकिन देर सही दुरुस्त हुआ। अभी आज की आपके अनुमोदन के बाद जब आदरणीय राष्ट्रपति जी इसकी स्वीकृति देंगे, जल्द ही यूनिवर्सिटी खोलने की सारे प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित रूप में एक देश में ये राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन करके आगे बढ़ेगा। ये हम सभी के लिए सुखद अवसर होगी। हमारी देश की जनजाति विषयों के बारे में विशेष अध्ययन करने का ये विश्वविद्यालय अपनी दायित्व निभाएगा। अध्यक्ष जी, जब सभी माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के विषयों को उठाया है, मैं सभी को आभार करता हूं। एक दो मित्रों की समान प्रकार की विषय रही है। कुछ मित्रों की डोला सेन जी ने अपने विषय को उठाते हुए शायद जो मूल विषय से भटक के और कहीं चली गई,
लेकिन मैं आपकी अनुमति हो तो एक विषय उदाहरण देना चाहूंगा। जिस अभी तो मेरे बहन डोला जी रहती तो उनको अच्छा होता, लेकिन सुन भी रहे होंगे और उसको बाद में रिएक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक तथ्य आज उन्होंने सदन में उठाई, तो मैं एक तथ्य आपके माध्यम से उपसभापति जी आज सदन में रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इतिहास को पुनर्लिखन करने का प्रयास कर रही है। शायद उन्होंने पूरा सब विषय को समझी नहीं। मैं दो विषय उल्लेख करना चाहूंगा। इस बीच में वो जो पार्टी से आते हैं, उस पार्टी के जो सरकार चलती है, तृणमूल की सरकार चलती है बंगाल में। बंगाल ने एक विकल्प नीति बनाने का प्रयास किया। हम भी बड़े उत्सुकता से था देख रहे हैं, देश में एक सर्वसम्मति से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, लेकिन उनकी क्या ऐसे मन में और क्या विषय आई है, उन्होंने विकल्प नीति बनाया। उपसभापति जी, उनकी मसौदा को अभी हमने जब सामने आया मैंने उसको पढ़ा, हमारी कुछ विशेषज्ञों को बिठा के भी पढ़ाया। सब 99% जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श है, उसी परामर्श को उन्होंने भी हूबहू अपनाया है। शायद भाषा में कुछ परिवर्तन हुआ, भाषा की विविधता है, और मेरे प्रधानमंत्री जी इस विषय में बड़े आग्रही रहते हैं। हम जितना लोक भाषा में जाए, स्थानीय भाषा में जाए, भाषा को लेके कोई आपत्ति नहीं है, मूल विषय और तत्व पहुंचनी चाहिए। मैं आज खुशी से कह रहा हूं, बंगाल की जो तथाकथित प्रयास हुई और कुछ राज्यों के अन्य मित्रों ने प्रयास कर रहे हैं, अंततः सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आना पड़ रहा है। मैं ये सुखद जानकारी हाउस में भी देना चाहता हूं। बंगाल ने भी 99% राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कॉपी ही किया है, धन्यवाद उनको। उन्होंने और एक बात कही है कि इतिहास को आप पुनर्लिखन करते हो। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने लंबे समय तक, सदन अभी इन दिनों में एक विषय पर चर्चा कर रही है, जब जम्मू कश्मीर के बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कुछ मसौदा लोकसभा राज्यसभा में पारित कर रहे थे, तब इतिहास की कुछ घटना को उन्होंने कोट किया, कुछ तथ्य कोट किया, उसको लेके राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है पिछले 2 दिन से। उपाध्यक्ष जी, जानबूझ के कुछ एक तत्व ऐसे एक सामंतवादी मानसिकता में ग्रस्त हो गए थे आजादी के उपरांत, जैसे ही वही देश है, उन्हीं की खानदानी देश की मालकियत रखती है। ऐसे परंपरा, ऐसे कुछ लक्षण देश के कुछ अन्य राज्यों में भी दिखने को मिलता है। जैसे 1-2 फैमिली ही उस राज्य की मालकियत उनके पास है, जैसे एक देश एक घर की परिवारवाद में चलता है, लेकिन तथ्य तो ऐसे नहीं कहते थे। ऐसे सारे छुपे हुए तथ्य को नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ किया है देश के सामने लाने के लिए। क्या सरदार पटेल जी को सम्मान करना नहीं चाहिए था? इस सरदार पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को इस देश भूल सकता है? इसीलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के सरदार पटेल को गौरवान्वित किया। अभी हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी उल्लेख कर रहे थे। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ये तो अभी नहीं बना है, ये तो इतिहास का हिस्सा है। हम इतिहास बदल रहे हैं। हमने कहा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, लंबी लकीर हमने खींचा। अगर किसी को इसी में आपत्ति है, हम क्या कर पाएंगे? प्रजातंत्र में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया, 2 बार कर चुके हैं। किसी के मन में संदेह नहीं कि तीसरी बार किसको मिलेगा। तीसरी बार भी मोदी गारंटी ही होगा। इसीलिए ये मैंडेट देश की इतिहास को छोटा करने के लिए नहीं, देश के इतिहास को बड़ा करने में लगा है। लंबी लकीर खींचने के लिए हम लगे हैं। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कई विषय में चर्चा करते हुए ये विषय सामने आया कि भाई देश में, सुबह भी चर्चा हुई, कई सदस्यों ने उसको भी उल्लेख किया कि भाई देश में विशेष करके SC, ST, OBC के बच्चे उच्च शिक्षण संस्थान में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। भारत सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM ऐसे संस्थाओं की नाम लिया गया। उपाध्यक्ष जी, मैं एक तथ्य आपके माध्यम से सदन में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। पिछले 5 साल की हमने एक एनालिसिस किया है। 5 साल की जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर मैं
आईआईटी को ही कोट करूं, आईआईटी की स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में 2,66,433 ये एडमिशन लिए, माने दाखिला लिए, 5 साल की क्यूमुलेटिव फिगर, और 5 साल में ड्रॉप आउट 4,081 हुए, 1.53%। ओबीसी में 1.51% ड्रॉप आउट हुए हैं, एससी में 1.47, एसटी में 1.29। ये आईआईटी सर्वोत्तम संस्थान में है। ये क्यों होता है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी? जब हमने एक मद्रास चेन्नई आईआईटी के एक डिटेल स्टडी करवाया, उसमें पाया, सुबह मैंने प्रश्नोत्तर के समय में उसको कहा था कि कई सारे विद्यार्थियों को अदर ऑप्शन मिल जाता है। चेन्नई आईआईटी में पिछले 10 साल में जितने बच्चे एडमिशन लिए थे, उसमें से 44 बच्चे ड्रॉप आउट हुए 10 साल में। 44 बच्चे जब ड्रॉप आउट हुए हैं, इनके कारण हमने ढूंढा क्यों ड्रॉप आउट हुए हैं। उनमें से 60% बच्चों को और कोई इंस्टीट्यूशन में दाखिला का अवसर मिल गया, यहां तो ड्रॉप आउट में दिखाया गया, लेकिन उनको कोई उन पढ़ाई से बाहर नहीं चले गए, वो पढ़ाई के अंदर रहे, उनकी सुविधा उनके मन के हिसाब से और कोई इंस्टीट्यूशन में गए। 40% में से 30-35% लोग विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य के कारण से ड्रॉप आउट हुए हैं, और उनकी संख्या कुल मिला के चेन्नई आईआईटी में 0.5% से नीचे है। मित्रों, यह कह देना कि आज इस सरकार के समय में ड्रॉप आउट बढ़ गया है, यह तथ्य उसकी परे है। अभी विद्यार्थियों के बारे में कहा जाता है, विद्यार्थियों की संख्या घटती है। मैं कुछ आंकड़ा आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। जब 2014-15 में हम लोगों को सेवा के अवसर मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब देश में जितना विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पढ़ते थे, पूरा समूचा उच्च शिक्षा में पढ़ते थे, उसकी नंबर 3,42,11,637, 3,42,11,637 ये था, जो आज बढ़ के 21-22 में ये बढ़ के 4,32,68,181 है। 26% की ग्रोथ हुई है उपाध्यक्ष जी, 26% की ग्रोथ हुई है। ये उच्च शिक्षा में इसी सरकार की उपलब्धि है। उसमें महिलाओं की ग्रोथ 31% हुई है। एससी की समूचा ग्रोथ, एससी स्टूडेंट में समूचा ग्रोथ 43% हुई है, और एससी की मेल स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ते हैं, 50% की ग्रोथ हुई है। एसटी की ग्रोथ समूचा, जितने बच्चे 2014-15 में पढ़ते थे और आज मैं उनको 21-22 में तुलना करूं, 65% ग्रोथ हुई है उपाध्यक्ष जी। और बच्चियों के अंदर एसटी बच्ची 80% की ग्रोथ हुई है। यह नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में। ऐसे ही ओबीसी, मैं माइनॉरिटी को कोट करना चाहूंगा। बहुत लोग हमारी सरकार को एक जबरन छवि बनाना चाहते हैं। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में उच्च शिक्षा की हमारी सरकार की पहल के कारण स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 38% की ग्रोथ हुई है माइनॉरिटी में, और उसमें महिलाओं की संख्या 42% हुई है। स्पेसिफिक अगर माइनॉरिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटी में जाऊं, बच्चियों के अंदर मुस्लिम बच्चियों के अंदर 45%, 7% ग्रोथ हुई है इसी सरकार की समय उच्च शिक्षा में। ये आज हमारी सरकार की उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कई मित्रों ने हमको इस विषय पे परामर्श दिया कि आपकी सरकार के समय में जो पद है वो रिक्त है, लेकिन तथ्य उपाध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं कहता है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। 2018-19 तक इस देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान थे, उसमें सामाजिक न्याय के तहत एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन दिखावे के लिए था, पॉलिसी में था, कोई मैंडेटरी नहीं था, कोई बाध्यता नहीं था। और विचित्र बात था, एक बार विज्ञापन कर दो, एससी एसटी की विद्यार्थी के अंदर योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे प्राध्यापक के लिए, प्रोफेसर के लिए,
तब उसको एक इंटरव्यू के बाद उसको जनरल में कन्वर्ट कर दो। उपाध्यक्ष जी नरेंद्र मोदी जी आए, इस धोखाधड़ी को पूर्ण विराम लगाए, एक नई कानून लेके आए, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 को लाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, उसको उच्च शिक्षण संस्थान की प्राध्यापक पदों में नियुक्ति में सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहली बार 75 साल की आजादी के उपरांत पहली बार जो लोग विभिन्न राज्यों में सरकारों में है, एससी, एसटी की गांव में एक पूजा घर बना दिए, अरे वाह, कसीदे की पहाड़ बना देते हैं। उन राज्यों में तो ओबीसी, मैं उपाध्यक्ष जी आज आपकी अनुमति से एक विषय कहता हूं, मेरे को मन में पीड़ा है, इसलिए आपके माध्यम से मैं बाहर कहूं तो गाली भी मिल जाता है, मेरे को अनाप प्रकार की गाली मिल जाती है आपकी संरक्षण में। मैं इस विषय में जिस राज्य से आता हूं, आपको सुनने में आश्चर्य होगा, ये कान आपकी विश्वास नहीं करेगा। देश की सभी राज्यों ने, अमूल चूल सभी राज्यों ने देश में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया है। एक छोड़ के, मेरे गृह राज्य छोड़ के सभी राज्यों ने शिक्षण संस्थान में, नौकरी में ओबीसी रिजर्वेशन संविधान की जो अधिकार हुआ दिया है, हमारे राज्य में नहीं है। यह विसंगति है। इसीलिए इस सारे विषय को ध्यान में रखते मोदी जी ने 2019 में एक एक्ट, सर्वे का साथ कोई संपर्क नहीं है, आप बड़े ज्ञानी हो, दयापूर्वक मैं उलझना नहीं चाहता हूं, मैं पीड़ा कहना चाहता हूं। आपको मेरे को छोटा करना है, निंदित करना है, आप कर सकते हैं, बड़े आदमी रसूखदार हो, लेकिन कृपा करके सत्य को सामना करने का अभ्यास सबको करना चाहिए। यह सदन इसीलिए है। मैंने भी सुना, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन जो विषय है ओबीसी की संविधान अधिकार, एससी की संवैधानिक अधिकार, एसटी की संविधान अधिकार, यह किसी की अधिकार नहीं है वंचित करने का। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस अधिकार को सुनिश्चित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, नियुक्ति में मैं
तुलनात्मक तथ्य देना चाहता हूं। हमें बहुत Amendment not moved. I shall now put the clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Mani Shri Dharmendra Pradhan ji to move that the bill be passed. सर करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now we'll take up another bill. माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मंत्री जी, मैं निजी टिप्पणी के लिए धन्यवाद आपको देता हूं। The repealing and amending bill 2023. The repealing and amending bill 2023. Sri Arjun Ram Meghwal ji to move a motion for consideration of the repealing and amending bill 2023. माननीय मंत्री जी, आप। Deputy Chairman, sir, with your permission, I move that the bill to repeal certain enactments and to amend an enactment as passed by Lok Sabha be taken into consideration. आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। सर, जैसे नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद लगातार ऐसे एक्ट जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, उनको समाप्त करने की एक प्रक्रिया चली और वो तेजी से चली। अब तक हम 1486 ऐसे एक्ट निरस्त कर चुके हैं। अभी 65 का एक बिल था, उसके बाद 11 ऐसे एक्ट ऐड हुए। तो इस जो मैं बिल लेकर के आया हूं, उसमें टोटल 76 ऐसे एक्ट हैं जिनको हम निरस्त करने के लिए आपके बीच में इस मान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए, इसमें कुछ आजादी से पहले के भी हैं और कुछ आजादी के बाद के भी हैं। तो ये टोटल 76 ऐसे एक्ट हैं, ये समाप्त करने का बिल है। इसमें एक दो का जैसे मैं उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जैसे द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। अब ये टेलीग्राफ वायर, किसी जमाने में टेलीग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होता था, उसकी वायर आप रख नहीं सकते। आप रखोगे तो अनलॉफुल एक्टिविटी होगी, आपको दंड मिलेगा। अब इस ऐसे एक्ट की अब कहां जरूरत है? तो ऐसे ही एक्ट हम समाप्त करने के लिए आपके इस महान सदन के बीच में आए हैं। और ऐसा पंच प्राण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें एक प्राण ये भी है कि गुलामी के अंशों से मुक्ति। तो ये प्री कॉलोनियल पीरियड के हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड के हैं, तो गुलामी के अंश भी हैं, तो उनसे भी मुक्ति मिलती है। और किसी कवि ने ठीक कहा, चूंकि आप कवि हो इसलिए मुझे याद आ गया कि आगे बढ़ना है तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा है, अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, ठहरा पानी थक जाता है वह तो अपनी काई से। तो ये सिस्टम में ईज ऑफ लिविंग, इस सिस्टम में अगर कोई ऐसा एक्ट है जो नागरिकों के लिए भी आवश्यक नहीं है, परेशान करने वाला है, जैसे मैंने कहा अभी एक्ट है द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो निरंतर ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए सोच रही है और नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग प्रदान कर रही है। इसलिए चर्चा करके या सर्वसम्मति से उसको पास कराएं, ऐसी मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मोशन मूव। अब माननीय वक्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा। माननीय डॉक्टर एल हनुमंतैया नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री जीवीएल नरसिंह राव, माननीय श्री जीवीएल नरसिंह राव प्लीज।
Yes, Mike, Mr. GVL Nursing Rao, Mike, please. Mike is not. Just wait for a minute. अब माइक आपके बगल, आप प्लीज. It's on now. Thank you, Deputy Chairman, sir. This bill is in continuation of a series of pro-governance measures initiated by Honorable Prime Minister ever since he became Prime Minister in 2014 May. As soon as he took over the reins of office, a two-member committee was established to identify all acts that are all legislations that have no relevance in today's context. And so far, 1,486 such acts have been taken off from the books, from the statute books. So this is a massive cleanup exercise. This was done to ensure that primitive and irrelevant acts do not find a part of the statute books. So in the present bill, we are actually seeking to repeal 76 such central acts which have no relevance or which do not need to exist as a part of this statute. 229 such acts have already been, state acts, which have been found to be irrelevant in today's context, have actually been recommended to the state governments to be repealed. But in this context, sir, I would like to say, not just repealing acts. Honorable Prime Minister Modi ji has taken a number of very reformative measures to ensure cleaner governance. जनता के ऊपर मेरा विश्वास है, ये मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहते हुए सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन जो पहले होता था, हर सर्टिफिकेट के ऑथेंटिकेशन के लिए आपको कोई गेजेटेड ऑफिसर के पास भागना पड़ता था, ऐसे स्थिति को पूरा प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया है। ये एक बहुत बड़ी राहत थी आम लोगों के लिए। सिमिलरली क्लास 3 और क्लास 4 के नौकरियों के लिए इंटरव्यूज को खत्म करके 2015 के बाद उसमें जिस प्रकार की जो एक डिस्क्रिशन होती थी, एक भ्रष्टाचार का एक स्कोप रहता था, उसको खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुछ ऐसे नौकरियां हैं, ग्राम डाक सेवक, जिसमें आपको केवल 10वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर आपको नौकरी मिल जाती है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। तो हर तरह का पॉलिटिकल और अन्य तरीके के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हर विषय में एक सुधार। पिछले सत्र में हमने एक बिल पारित किया था जो प्रिंट मीडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी एक प्रक्रिया थी। उसमें कलेक्टर, वो जो ब्रिटिश काल में जो मीडिया पर जो अंकुश रहता था, उस प्रकार का अंकुश आज की दुनिया में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको खत्म करने का काम हमने किया है। सिमिलरली पिछले सत्र में हमने जन विश्वास एक्ट के बिल के जरिए हमने सभी बहुत सारे कानूनों में जो क्रिमिनल प्रावधानें थी उसको खत्म करने का काम किया है। तो प्राइम मिनिस्टर has fulfilled his commitment of minimum government and maximum governance. तो ये न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन, तो इसके जरिए जो देश की जनता ने इस पूरे प्रक्रिया को, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रक्रिया को पूरी तरह समर्थन किया है, उसका नतीजा आपको हाल के चुनावों में भी नजर आए और भविष्य में बहुत जल्द 2024 के चुनावों के नतीजे में एक भव्य जीत के साथ फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के सत्ता संभालने का निर्णय देश की जनता कर चुकी है। तो इसका गवर्नेंस, प्रो गवर्नेंस और रिफॉर्म सबसे बड़ा एक कारण है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग, आम नागरिक के जीवन में किस प्रकार उनकी जो जीवन में सरकार के द्वारा जो कष्ट झेलते हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, सरकार के द्वारा ईज ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार सामान्य मानवी के जीवन में एक परिवर्तन लाना, एक मूलभूत परिवर्तन लाना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य रहा है। और इस लक्ष्य को साधने में इसको अचीव करने में माननीय प्रधानमंत्री जी सफल हुए हैं,
यही देश की जनता का आशीर्वाद का प्रमुख कारण है। ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय जीवीएल जी, not present. Honorable Dr. Kannimoji NVM Somo, not present. माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, not present. माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान जी, please. रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 ये विधेयक देश की कानून व्यवस्था में सुधार लाने और बेहतर बनाने के लिए आम आदमी की सहूलियत के लिए लाया गया है। 65 अप्रचलित कानून को निरस्त करने के लिए उद्देश्य से 2022 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने इसको लाया था लोकसभा में, और अभी वर्तमान हमारे कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने और 11 ऐड करने के बाद 76 कानूनों को निरस्त करने के लिए जो कुछ काम में नहीं आता है, आज ये बिल पेश किए हैं। 27/7/2023 को लोकसभा में ये विधेयक पारित कर लिया गया है। विधेयक के 3 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची, इसमें वर्ष 1850 से 2020 के बीच अधिनियम 35 अधिनियम शामिल है। दूसरी अनुसूचित शेड्यूल जो है, इसमें वर्ष 2013 से 2017 के बीच अधिनियम 41 विनियोग अधिनियम शामिल है। तीसरी अनुसूचित विनियम अधिनियम जो है 2011 में एक माइनर संशोधन के साथ ये आया हुआ है। ये बिल जीवन जीने में आसानी और काम करने में आसानी सुनिश्चित करेगा। अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने या के उद्देश्य से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करता है। वर्षों से जो कुछ जमा हुआ है उसे ठीक करने के लिए इस एक बार के प्रयास पर भरोसा करने के बजाय ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए भी गति का अवरोध किया जाना चाहिए। समय समय पर समीक्षा खंडों को कानून में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे जैसे कानून अधिक स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, स्थिति को कानून को संभालने के लिए इसको मेरा मानना यह है कि इस स्थिति के आसपास की परिस्थितियों को बदले जाने की बहुत जरूरी है और इसके जांच के भी बहुत जरूरी है। कानून के समय समय पर समीक्षा के लिए समाधानों की इफेक्टिवनेस और समस्याओं की प्रकृति के बारे में चर्चा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सबूत आधारित 3 निर्णय को बढ़ावा दिलाना जरूरी है। ये इसके माध्यम से किया जा सकता है। सूर्यास्त खंड जो कि इंटरनेशनल लेवल में दूसरे देशों में 20 से अधिक वर्षों से सनसेट क्लॉज के व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। यूरोप के कुछ देशों में कानून को समीक्षा तंत्र शामिल है, जिनमें इंटरवल पर एक निर्दिष्ट तरीके से किया जाता है। भारत में कहीं भी कोई भी संस्था नियमित रूप से ये नहीं देखती कि कानून जमीनी स्तर पर ठीक से पहुंचता है या नहीं, या ठीक से चलता है या नहीं। आमतौर पर कंसर्न मिनिस्ट्री किसी कानून के संपूर्ण या विशिष्ट भागों को मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करता है। पार्लियामेंट्री कमेटी कभी-कभी विधान जांच कराती है, लेकिन ये जांच सफिशिएंट नहीं है। हालांकि अधिकांश मामलों में विधान जांच का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि 76 कानून, जो 76 कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव आया है, इसको मैं समर्थन करता हूं। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कानून अभी है
जो कानून को लेकर अभी भी समस्या है, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को गोली मारने के बाद भी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारने के बाद भी 27 साल 30 साल लग जाता है न्याय पाने में। तो जरूर उस कानून में भी कोई त्रुटि होगा, उस कानून में भी कुछ सुधार लाने की बहुत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के कहना चाहता हूं कि न्याय जितना जल्दी मिल सके, डिसीजन जितना जल्दी मिल सके, वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा और उस इंसान के लिए भी अच्छा होगा जो कि इसमें विक्टिम हुआ हो, वो दोषी है या नहीं है। बेकार में 10-10 साल 8-8 साल जेल में लोग रहते हैं, 10 साल के बाद पता चलता है वो निर्दोष है। तो इस चीज को हमको देखना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अनुरोध करता हूं कि इस चीज को आप रेक्टिफाई कीजिए, ताकि जो सरल लोग हैं, कोई बेकार बेमतलब का फंस के रहते हैं, जेल में अपना जिंदगी काटते हैं, उन लोग जेल से कैसा मुक्ति पाएंगे, इसको आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुजीबुल्लाह खान जी। माननीय श्री बीडा मस्तान राव यादव जी, प्लीज। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak on such an important bill on behalf of our YSRCP party. We have no objection to this bill and welcome it wholeheartedly. It is a credit to this government that they have brought in such a widespread changes and sought to alter laws and regulations that have become absolute. India is a dynamic nation, and our constitution makers were aware of this when they laid down the fundamental principles which would guide our nation, but allowed for enough flexibility to make changes and ensure that no law could keep the people of India entrenched in the past. The fact that this government has made concerted efforts to unearth contradictory and absolute legislation, some of which dates back to colonial times, ensures that we honor our roots as a nation open to change and progress. Additionally, it severs any unnecessary ties to outdated draconian laws from the era of British rule and usher our country into a new era of liberation where we actualize our dreams of becoming Vishnu Guru. Our suggestions are AP Recognition Act. While I wholeheartedly support the breadth of the changes being made through this bill, I would also like to highlight that Andhra Pradesh had requested an amendment to the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. This has been brought to the attention of this House through multiple interventions, including private members' bill and through the government more directly through personal representation from honorable MPs and state leaders of Andhra Pradesh. We have requested that promises made under AP reorganization be actualized in a time-bound manner. There are several matters which till date have no end in sight. This includes the central tribal university promised to Andhra Pradesh government, which only began functioning in 2019 from a temporary campus. There is no clarity on when a permanent campus will be provided. Please speak on the subject. Sir? You speak on the subject, Mastan Raoji. No, this is also some amendment to a reorganization bill is required, sir. This is our humble request. It's good. Similarly, we request that special category status be provided to the state. Such a status would enable us to get a higher share in central grants and tax incentives, resulting in the reduction of financial burden on the AP government. It is required by AP because we have been fiscally struggling due to an unscientific bifurcation, wherein amongst numerous resources we lost our capital city also. Even the 15th Finance Commission has stated that given such a status is within the mandate of the center to provide if it deems it necessary. I request that in face of new changes being brought by the government, this too be given due weightage. Additionally, the funds promised to AP for development projects should be handed over to our government in a smooth and efficient manner. Till date, many projects such as the Polvaram irrigation project are stuck halfway due to disputes over funding. So
This disrupts the intent and nature of the law, which was meant to provide developmental support to Telugu people. I request that these stipulations be reconsidered Please and the conclude. commitments made to us be legally Mani Bida strengthened. Ramastanji, you know the rules. Yes, sir. You know the rules. You have to Yes, sir. speak I on am this coming bill. to again the You have main to subject, speak sir. on this bill as per There rules. are a few laws which do need amendment because they are simply baffling and highly outdated considering our times. I would like to highlight the following. As per the Indian Aircraft Act 1934, any Indian citizen who flies balloons or kites without license is an offender. The House is well aware that flying kites is a common method of celebration and strong part of Indian cultural ethos, especially for children. While this is not usually implemented, it is the time this stipulation be removed. The Indian Treasure Trove Act of 1878 states that any treasure found under the soil which is equal to or more than 10 rupees has to be reported and shared with the government. If any person does not do so, they are liable to be arrested. This is vague and extremely confusing for the general public, and this can easily be misused by mischief makers to prosecute innocent citizens. On a more grave note, there are pressing laws that need urgent reform so as to prevent serious miscarriages of justice. This includes the Indian Penal Code and severe laws pertaining to the treatment of criminal. For example, as per Section 294 of the Indian Please, your Just time one is minute, over. please, sir, one Your minute, time sir. is over. As per Section 294 of Indian Please. Penal Code, any Mani one Bida who acts in Mastan an Rao ji, your time is Okay, sir. over. Conclusion, sir. I have Please. already stated that I wholeheartedly, on behalf of our YSRG party, support the proposed bill. Thank Through you. my speech, I Thank merely you. wish to point out certain inconsistencies which cannot be allowed to remain in Thank the you. Thank you. current Conclude. I am climate and calling further the good work of Mani this Sri Kyal government. Suresh Reddy ji. Okay, sir. Mani Sri Kyal Suresh Reddy. The mic is on now. Yeah. Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak on this, though considered a normal, a routine bill, but with a lot of significance. The Honorable Minister, in his explanation of the bill, has very rightly stated that some of the bills which are outdated, antiquated, which have lost their relevance, need to be withdrawn, repealed. Well, that definitely is a good measure. It's a measure which can lessen the burden on the judiciary. It's a measure which can sharpen the bureaucracy and ultimately help the people at large. So any initiative in this regard, general help to the people is always welcome, and getting updated is a very good initiative, especially today and more so in the international forums. Having said that, having appreciated their initiative, you have to see the other side of the coin too, sir. When a bill is passed, the bill gets effective only after the rules are made. Now, when we see the bills, there are so many bills which have been passed where the rules are being pending, and the subordinate legislation goes through all this. And just the other day, we had a presentation of so many reports stating very clearly that the bill passed, the rules not being framed, and they have been delayed for a considerable period of time. Now, the onus lies on the Honorable Parliamentary Affairs Minister to look in this direction. While the government is reforming, the legislature, the parliament also needs to rise to the occasion. While the government is reforming, the parliament has even more bounded duty to realize its realism, because ultimately the laws are made here. So subordinate legislation is one area which needs your attention. Another most important aspect of any legislation, Deputy Chairman, sir, is how do you analyze the impact of it? The legislative impact assessment. There are two ways of looking at it. One is before the bill is introduced by the government definitely puts it up in public domain for its input. There's only a policy in 2004 which has been framed, but there's no law which mandates the government that any bill
proposed should be put in public domain. And to quote a small example from 2016 to 2019, Deputy Chairman, sir, there were almost 186 bills introduced, out of which 142 bills did not get public scrutiny before coming here. So that is very glaring in such a big democracy where the public input is not taken before the introduction of the bill creates a lot of, I would say, more than uneasiness to the people, also trouble to the government. And then comes the post. After the bill is introduced and passed, how effective is the bill? Is there any impact assessment mechanism? Well, world over, most of the developed countries do have this mechanism. They evaluate how beneficial the bill is to the people. If there are certain amendments to be made, it will come through that, and then the government can come in through those necessary changes. One good example for that impact assessment not being done and the damage being done to the society at large and to the government in particular was the farm bills. The farm bills were introduced. The impact assessment was not done. We went through a huge dharna, people died, and ultimately the government had to go back on that. So this is one area where the legislature, and more so from your side, sir, from the chair side, we need to get a little more dynamic in this and ensure that the parliament lives up to its bestowed responsibilities. And finally, sir, and finally, last thing is the international treaties. There are so many international treaties the government is signing. While you have removed a lot of outdated bills, there are certain treaties which come in. For example, the Antarctic bill came in. A treaty signed 40 years ago, now you come and made that into a bill. So the government should realize all these international treaties which you're signing, you're coming to this house after 20 years, 30 years, where the relevance is lost. So while welcoming, removing the outdated bills, I also seek the Honorable Minister's intervention in this regard and ensure that we not only become, finally, sir, finally, just a small thing that... Your time is already over. 1 minute more. Well, if my time is over, I respect your thing, sir. I thank you for it. No, you want to speak, conclude, you please do. So, I mean, I was just talking about, we being a representative democracy, and if the suggestions suggested by most of us from here, if are needed, then you turn into a responsible democracy. That is what the country needs today. Dynamism doesn't mean just removing outdated bills, but dynamism means that you bring in legislation which is beneficial to the people, and also before legislation and after legislation, involve the people. So that is how the bills in letter and spirit would be appreciated. Thank you, Thank you. Thank you, Mane K.R. Suresh Reddy ji. Mane Shri A. Rahim, not present. Dr. M. Thambi Durai ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. On behalf of ADMK Party, I am participating. Honorable Minister has brought the bill, the Repealing and Amendment Bill 2020. Since 1950, sir, there have been various repealing and amending acts. Acts of 1,307 acts were repealed from 1950 to 2001. There have been 2 repealing and amending acts in 2015 and 2017, each and one in 2016. The latest act is the Repealing and Amending Act 2019. The act is a periodic measure taken by the legislature to repeal laws which are obsolete and defective. Sir, there is some kind of things we know that most of the acts are enacted the British period, the parliament that even though we are calling our Indian constitution, still had whatever the British acted laws are still prevailing. It is that. Therefore, it is a part of that. There is one thing is that there are simple of old, there may be old laws. Other countries also have old laws. But why the repealing means the old laws not necessary. These old laws can be used to harass the people. Therefore, what is the necessity of this kind of acts? That is the rules there.
And also, sir, I want to bring to the Honorable uh, Minister, Honorable Minister. Yes, Dr. Thambi Duraiji, please. Minister, Honorable Honorable Minister is I want to listening. bring to its knowledge because I want to say it's a very important issue. Sir, around 65 of the cases are pending in Supreme Court, 4 million in High Court, and 26 million in lower courts. So many cases are still pending. That is 40 million pending. Therefore, this kind of laws, when we are having so many laws, it is very difficult to overcome the problems of the claims. As our honorable member said very exactly, the laws are meant for the public, for democracy. For democratic spirit, we are bringing legislating laws. It must be useful for the people. If at all not useful, there is no use for it. Therefore, in that sense, if honorable minister has brought this kind of amendment, these are old laws to repeal, they are appreciating that. I hope that the new laws, when we are old laws also, when we are removing that, if at all any relevancy is there in that laws also, that has to be modified and kept for this, for the public. We cannot simply remove all the laws because the British brought. That is my suggestion. Thank you, Dr. M. Thambi Duraiji. माननीय श्री महेश जेठमलानी जी, माननीय श्री महेश जेठमलानी जी, 3 minutes. Sir, this bill is a formal bill. It's basically a case of legal house cleaning, sir. Our legal go-down had become overfull with laws which are obsolete, some of which were pointed out by the previous speakers and the law minister in particular. So, sir, there was a need for some legal house cleaning, particularly, sir, since the previous government had not undertaken this task and left many obsolete laws. So the work of this government ever since 2014 has been in that direction. And of course, it's unlike empty slogans like Garibi Hatao, it's towards the policy of Nyuntam Sarkar, Adhiktam Shasan. So it's an exercise in that direction. And it's an exercise essentially in, as I said, cleaning our legal go-downs. Also, there are 3 categories. As I said, it's a very short bill, but there are 3 categories. And from those categories, which are set out in 3 different schedules, one will be able to discern what are the natures of the laws that are being got rid of now. So, sir, in Schedule 1, they are laws which are basically either obsolete, they are being repealed altogether. As the Honorable Law Minister pointed out, for instance, a law which has been overtaken by technological advancement. So the Telegraph Wires Unlawful Possession Act, this is now almost obsolete. Nobody uses it anymore. We are in the age of spectrum now. So, sir, this law is obsolete. And many of them are colonial laws. They date from 1850, 1855, and so on. So they have been removed from the statute book. So then there are laws which are amendment laws. If you see, half of the first schedule are what are called amendment laws. Now, those are amendments to existing statutes. These are amending acts, and these amendments have now been incorporated into the parent act. So they have become completely useless now. They're of no purpose being on the statute books. They only serve overburden our legal go-downs and our statute books. So the second schedule, if you see, is almost entirely of appropriation bills for a particular year. So you have an appropriation bill for 2013, 14, 15, 16. Now these have time limits. They're only for that year. They've outlived their time purpose now. Their shelf life is over. So these also have to be, they're unnecessarily still on the statute books, and they have to go. So this is the second category. And the last category is a single case, sir. If it was a case of an amendment, then, sir, it would be, or a serious amendment to any act, then, sir, it would be discussed, it would be debated in both houses. But this is a formal amendment. One word has been dropped in a particular statute, which is the Factoring Regulation Act. So there is an amendment act of very minor consequence. It's more a grammatical change. And so that is why the third schedule is there, which consists of an amendment to only one act, which, as I said,
is the Factoring Regulation Act. So, sir, as I said, the policy of minimum government, maximum governance. This is an act to further that object. It is an act to further the absence of harassment to ordinary citizens, particularly the poor, and to enhance the ease of living and ease of doing business for businessmen and such categories. Sir, I wholeheartedly welcome this bill. It's a necessary bill. Formal though it is, at least, sir, it's an exercise in much needed legal housekeeping. I thank you for giving me permission to speak, the Law Minister and my parties. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय महेश जेठमलानी जी। माननीय श्री राघव चड्ढा जी, माननीय श्री राघव चड्ढा नॉट प्रेजेंट। माननीय डॉक्टर फौजिया खान, माननीय डॉक्टर फौजिया खान नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री नरेश बंसल जी, माननीय श्री 3 मिनट। तुम्हारे हाथ माइक इज ऑन। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का आदेश दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार आई है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, और इसको लेकर जो आजादी के पहले से गुलामी की मानसिकता की चीजें थी उनको हटाने का अभियान चला। समाज में सब प्रकार से स्वच्छता अभियान चलाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और हर क्षेत्र में उसका परिणाम भी देखने को मिला। वह केवल झाड़ू वाली स्वच्छता ही नहीं, अनेक प्रकार से आज का जो विषय है रीअपीलिंग ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, जिसमें बहुत सारे कानूनों को जो एक प्रकार से भार थे हमारी जनता के ऊपर, उनको समाप्त करने का काम सरकार प्रारंभ से ही कर रही है। ऐसे अनेक कानून, क्योंकि मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो इसलिए बनाए थे कि वो हम पर शासन कर सके, हमको प्रताड़ित कर सके। वो उसको सुधार के लिए नहीं थे, अपने शासन को मजबूत करने के लिए। आजादी के बाद वो कानून समाप्त होने चाहिए थे, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में जो पुराने पुराने बर्डन थे उनको समाप्त करने का काम किया। 40 साल की 1 रैंक 1 पेंशन, उसको सॉल्व किया। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा नीति 34 साल के बाद उसमें परिवर्तन किया, जिससे आने वाली पीढ़ी देश के स्वाभिमान की आवश्यकता के अनुसार देश के शासन में सहयोग कर सके। इसी प्रकार से कानून के अंदर भी ऐसी बहुत से कानून, लगभग 1486 कानून, ये इनको निरस्त किया गया। जो एक कमीशन बना 2 सदस्य, उसकी रिकमेंडेशन पर, क्योंकि एक भार थे हमारे ऊपर, बहुत सारे कानून लागू ही, उनका आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वो कानून की किताबों में भी बोझ थे, हमारे जजों के ऊपर भी बोझ थे, हमारे वकीलों के ऊपर भी बोझ थे और हमारी जनता के ऊपर भी बोझ थे। उनको समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज उसी प्रकार से हमारी सरकार ने जो 2014 में 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, उसके आधार पर 1458 अधिनियमों को और इसी प्रकार से निरसित कर दिया गया और संबंधित मंत्रालयों द्वारा निरसन के लिए जो 28 संशोधन अधिनियम छांटे गए, उनको भी निरस्त कर इस प्रकार 1486 अधिनियमों को निरसित किया गया। माननीय स्वरूप सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ऊपर कहा गया कि अधिनियमों को निरसित करने के लिए अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना, हर आम आदमी को सुविधा प्रदान करना, सभी क्षेत्र में जिस प्रकार इजी डूइंग बिजनेस में अनेक प्रकार के कानूनों को निरस्त करके
हम जीएसटी लेकर के आए, जिसमें 17 कानूनों को पूरे वन नेशन वन टैक्स करके सम्मिलित किया गया और लोगों को व्यापार में और टैक्स देने में सुविधा प्रदान की गई। इसी प्रकार से हमने इजी लिविंग में भी बहुत सारे सुधार के काम किए हैं। उसी को आगे रखते हुए हम इस प्रकार से आज ये बिल लेकर के आए हैं। माननीय हमारे कानून मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये बिल उन 229 राज्य अधिनियमों को निरस्त करने के लिए जो राज्य को भेजा गया था, संबंधित राज्य सरकार ने अब तक 79 उसमें से निरस्त कर दिए गए हैं और आज ये 65 कानून जो अधिनियम को निरसित करने के लिए आज ये कानून पुनर्स्थापित किया गया है। इसमें 11 कानून और जोड़े गए हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व के थे, जिनके कारण आम आदमी को बहुत असुविधा होती थी। आम आदमी के मतलब के वो कोई कानून थे नहीं, केवल कानून की किताबों में वो बोझ के रूप में पड़े हुए थे। आम आदमी को उससे परेशानी होती थी। हमारे जजेज भी उसके दबाव में रहते थे, हमारे वकील भी उसके दबाव में रहते थे और जनता को किसी प्रकार की उससे सुविधा नहीं थी। जनता के लिए भी वो एक प्रकार से हर्डल थे। लोकसभा में 27/7/2023 को इसके लिए 76 अधिनियमों के लिए जो बिल लाया गया था और वहां पर वो पास हुआ है, उसी को आज यहां पर लाया गया है। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन इसके लिए जानी जाती है। हर क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो और हर आदमी को सुविधाजनक रूप से देश के नागरिक के रूप में, कर्तव्यवान नागरिक के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करने का मौका मिले। इसके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हमने इसी प्रकार से देखा कि जो देश के अंदर विदेशों से फंडिंग वाले, बैठ जाऊं सर? नहीं, कंक्लूड करो, बैठो मत। हमने देखा कि यू आर मेकिंग वेरी गुड पॉइंट्स। मैं कर रहा हूं सर, तो उसको कंक्लूड करो। हमने देखा कि विदेशों से फंडिंग वाले ऐसे अनेक एनजीओ थे जो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जुड़े रहते थे। ऐसे लगभग 20,000 एनजीओ निरस्त किए गए। 2 लाख के करीब शेल कंपनियां जिनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के काम होते थे, काले धन को सफेद करने का काम होता था, उनको निरस्त किया गया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में सुधार करने का काम हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। और अभी पिछले दिनों ही हमने देखा किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए हुए पुलिस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, उनको निरस्त करके अपने नागरिकों के स्वाभिमान के अनुसार नया कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस प्रकार से सभी जो देश के ऊपर इस प्रकार के भार या अनुपयोगी कानून थे या जिस क्षेत्र में भी अनुपयोगिता है, उसको समाप्त करके हम देश को अगले 25 वर्षों में संकल्पबद्ध हैं कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और उसके लिए हम इस प्रकार के सारे सुधारात्मक कदम उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। श्री पी विल्सन, 5 minutes, sir. Sir, this bill amends and introduces Section 3G to establish a tribal university in Telangana with the budgetary provisions of 889.07 crores for 7 years in 2 phases. Thank you, Chairman, sir. I'll talk on this. Sir, so far as this repealing bills are concerned, sir, it is better to have a sunset clause in all the bills. Whenever you introduce a bill, you should have a sunset clause so that
once the bill is introduced and act is passed, that sunset clause by itself, the bill becomes defunct and it amounts to a repeal. So this sunset clause has to be introduced so that we can avoid this much of valuable time in future for having a separate repeal bills. I understand whenever you bring in an amendment by way of an act, that amendment act will be there and it can be repealed only by a repeal act. So when you introduce this type of sunset clause in the bills, that will help us to save much time of this house and we can debate on the people's issue, number one. Sir, so far as number two is concerned, sir, whenever you bring an act, why don't you consult the stakeholders? I have seen, sir, I have been in the Committee of Law and Justice. Sir, the judiciary is taking the strain of hearing or because of the act which is being brought. So why don't you have a judicial impact assessment being done whenever a bill is introduced into the house? Before a bill is introduced into house, why don't you have a consultation with the stakeholders, consultation with the judiciary, consultation with the advocates, consultation with the persons who is going to be affected by the bill? So for example, I would say the Negotiable Instrument Act, when you brought an amendment, section 138 of Negotiable Instrument Act, it had a docket explosion. All of a sudden, lakhs of and when it becomes an act, how far it is going to have an impact on the judiciary, on the litigants. So this study can be done before a bill is being introduced so that it will not be a surprise for all of them. If you want to bring an act which is going to affect a trade community, or it is going to affect lawyers or other set of peoples, so why don't you have a hearing and tell them, and so you can also interact with them and they will also be suggestion. No, why I'm saying is there are a lot of amendments being brought. Sir, I will say today, take arbitration act, sir. Sir, under section 34, if you want to set aside an award, the court which is hearing a matter against an award passed by an arbitrator, it has no power to modify a decree. It has to only set aside and send back again to the arbitrator. Sir, arbitrators are taking about years together. Imagine an arbitration goes on for about 5 years. And when the matter comes to the court and the court hears the matter, and after another 5 years, if the court is not empowered to modify award and make it as a degree, and the power is only to the extent of sending it back to the arbitrator, sir, these types of powers, sir, has to be regulated by way of having a discussion with the stakeholders whenever before it's being introduced before the parliament. So that is what, sir, I would say, that these repealing acts are unnecessary. You can stop it by introducing a sunset clause at the beginning itself. So that would be my suggestion, sir, so that we can avoid the wastage of time of this house. And if this sunset clause, this has been followed in the foreign countries, I could say. So this can be adopted and we could save time. We can concentrate much on the people's issues, and the other issues can be taken into consideration. Number one. Sir, another important issue, sir, which I've been telling you is, sir, the social diversity is not there in the judiciary, sir. When you take the representation of the number of judges in the High Court or the representation in the Supreme Court, sir, the social diversity is lacking in the High Court and it is also lacking in the Supreme Court, sir. Please see, sir, the information given to the Parliament by the Ministry of Law and Justice. If you see from 2018 to 2023, sir, I am told that about 80% are from the
upper caste, I would say from the one community, I don't want to name the community, and the rest of 20%, sir, are coming from the backward class and from the scheduled caste and scheduled tribe. And if you see the Supreme Court, sir, is still worse. So we had, in fact, sir, we had even brought a You report. made your point, sir. Very, very emphatically, you have made your point. Yes. So I would only ask I'm grateful to the chairman. And this representation, why don't you consider, sir? Sir, what is wrong with a backward class person coming as a judge? And do you think that he can't deliver judgment? Sir, I can see two things, sir. Whether the collegium has failed to identify a person with whose merit from other classes, or whether the collegium is not interested in identifying a meritorious persons from the other classes. You have made your point, sir. So therefore, high time, Chairman, sir, that let this be considered. And thank you very much for allowing me to speak on this bill. Before I call upon the Honorable Minister to reply the discussion, lawmaking is a very serious business. We alone are entrusted with lawmaking. And there are two different categories. If Parliament, which is the ultimate architect of the Constitution, makes some change in the Constitution, that is final. There can be no intervention from any agency, be it executive or judiciary. But if there is a legislation, judiciary has a method of intervention by way of judicial review, because every legislation has to be in accordance with constitutional prescriptions. So things are very categorical. To the extent a constitutional provision is concerned, any intervention, Honorable Minister, any intervention with respect to constitutional provision emanating from Parliament is not acceptable. Parliament is the only reflector of the opinion of the people. This is by way of a structured platform. People of this country indicate through the ballot and send their representatives here. I'll just tell you, we must be quite serious about it. I'll just read one provision of the 10th schedule of Indian Constitution, and that will surprise all of you. And that is 10th schedule, clause 6. Decision on questions as to disqualification on ground of defection. But if you go to proviso, provided that where a question has arisen as to whether the chairman or the speaker of a house becomes subject to disqualification, the question shall be referred for decision of such member of the house as the house may elect in this behalf, and his decision shall be final. Now just reflect, where is the question of disqualification of chairman Rajya Sabha? So we have to be extremely careful. This was drafted at a time, it was just before we came to power in 1989. So it's a serious business. I will urge all of you that we are the ultimate custodians of the rights of the people, sovereignty of the people, by ensuring that we act diligently, vigilantly, with thorough preparation, make appropriate inputs, and do not permit any incursion whatsoever. What is our mandate? And that is ultimate authority to ensure constitutional compliance and be the architect of Constitution. Any intervention in this area should be repelled. There was an occasion where we discussed an important bill. I was looking right, left, and center.
that someone would reflect, can the highest court of the land make an interim legal arrangement that is 100% mandate of this House? I'm sure we will engage more seriously when it comes to lawmaking. Honorable Minister, Sri Arjun Ram Meghwal, these reflections were because the Honorable Minister is handling the Department of Law and Justice. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, ये जो द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल जिस पे आज ये महान सदन चर्चा कर रहा है, इस बिंदु पर या इस बिल पर 8 लोगों ने अपने विचार रखे। जीवीएल नरसिंह राव जी से लेकर के और पी विल्सन तक सबने विचार रखे। इसमें हमारे तंबी दुराई जी ने भी विचार रखे और महेश जेठमलानी जी भी, नरेश बंसल जी, के.आर. सुरेश रेड्डी जी, मस्ताना राव बीडा जी, मुजीबुल्लाह खान, सबने अपने विचार रखे, सबने अपने सुझाव भी दिए और सबने ये माना कि जो कानून जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है उनको समाप्त कर देना चाहिए। सबने इनका बिल का समर्थन भी किया। सभापति जी, ये एक विषय है जो जनरल एक परसेप्शन भी है, एक सिद्धांत भी है, एक प्रिंसिपल भी है कि मनुष्य की प्राकृतिक मौत हो सकती है। मनुष्य उसकी एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे एज आई 100 साल, 80 साल, 70 साल, तो एक प्राकृतिक मौत हो सकती है। लेकिन को अधिनियम है, उसकी प्राकृतिक मौत नहीं हो सकती। उसको अगर किल करना है तो संसद में ही लाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बार बार आकर के यहाँ किल करने का प्रयास कर, क्योंकि आवश्यकता नहीं है ना ऐसे बिलों की, लेकिन बार बार आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा एक साथ आ जाओ, बार बार बताओ। कुछ लोगों ने सनसेट क्लॉज जैसे सुझाव भी दिए, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया ऐसी है, ये नेचुरल डेथ का विषय नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से पास है, कुछ राज्यों की विधानसभाओं से पास है, वो संसद में ही पड़ी। देखिए, हर बिल में एक एक्ट का नंबर होता है। हर बिल में एक्ट का ईयर भी होता है, कौन सा लेजिस्लेचर लेके आया, किस विधानसभा ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, इसका उल्लेख भी होता है। और जिसका पुरुषोत्तम जी रूपाला साहब बार बार जिक्र करते हैं, वो इनेक्टिंग फॉर्मूला भी होता है। तो ये सारी, और रिपब्लिकन ईयर भी उसका होता है। तो ये सारी चीजें होने से हम सबको एक साथ लेके आ जाएं, ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। सनसेट क्लॉज के बारे में आपने जिक्र किया, इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। जो बिल था ओरिजिनली, इसमें 65 ऐसे अधिनियम थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक ऑफिशियल अमेंडमेंट के द्वारा ये 11 ऐड हुए हैं, तो टोटल 76 ऐसे कानून जिस बिल की हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी 2014 में शासन में आए, मोदी जी के आने के बाद 1486 हम पहले ही ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनको समाप्त कर चुके हैं। 76 ये जो आज महान सदन इसको पास करेगा, तो टोटल 1562 ऐसे कानून जो जिनकी आवश्यकता नहीं है वो समाप्त हो जाएंगे। तो जो नरेंद्र मोदी जी का एक प्रिंसिपल था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और इससे नागरिकों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का भी मार्ग जो है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे बिल थे जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था आपको, आपके आने से, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और नागरिकों को तंग करने के अलावा कोई काम नहीं। जैसे पहले मैंने टेलीग्राम वायर का जिक्र किया,
कि कोई रख नहीं सकता। अब टेलीग्राम वायर नाम की जैसी कोई विषय है बचा ही नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी बची नहीं है। ऐसे ही एक शुगर कैन का विषय था कि शुगर कैन को हम असेंशियल कमोडिटी जैसा मानेंगे। अब असेंशियल कमोडिटी एक्ट आ गया, उसमें चीजें डिफाइन होगी, शुगर कैन का उसमें विषय नहीं रहा। तो ऐसे अननेसेसरी के एक्ट थे, लेकिन इस पे सोचा नहीं किसी ने। हम अगर यूपीए कालखंड की बात करें 2004 और 14 में साहब ऐसा एक भी ऐसा एक्ट जिसकी प्रचलन में किसी आवश्यकता नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ। और मोदी जी के आने के बाद 1562 ऐसे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए नागरिकों को सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी से कर रहे हैं। जैसे मेटल कॉर्पोरेशन है, अब मेटल को एक्वायर करना अपराध, मेटल कोई मेटल कॉर्पोरेशन का एक इसमें मैं लेके आया हूं। तो अब इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनका जिक्र अलग अलग सदस्यों ने किया है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री का काम होता है, कुछ एक्ट स्टेट के होते हैं, कहीं पर स्टेट्स की ओपिनियन भी ली जाती है, इन सब में टाइम लगता है। लेकिन ये भी एक काम था, मोदी जी से पहले इस पे तेजी से विचार नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद लगा कि भाई ऐसा ये भी एक काम है, अननेसेसरी के एक्ट क्यों पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो पंच प्रण है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लाल किले की प्राचीर से भारत को विकसित भारत बनाना, मानव केंद्रित, ईज ऑफ लिविंग, यहां भी एक विषय आता है। गुलामी का कोई भी अंश हो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये कानून जो गुलामी के पीरियड के बने हुए हैं उससे हमें मुक्ति मिल रही है, वो भी पंच प्रण के माध्यम से हमें उसमें जो है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण का विषय है, उस दिशा में भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सनसेट क्लॉज के बारे में जो पी विल्सन साहब कह के गए, मैं ये कह सकता हूं कि सनसेट क्लॉज इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सनसेट इज बीइंग कंसिडर्ड एंड कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। आगे उस पर क्या विषय आएगा हम आपको बता देंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखती है, इसलिए हम ऐसे एक्ट जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो ठहरे पानी की तरह हो गए हैं, उन्हें रिपील करने का काम आज इस बिल के माध्यम से मान सदन के समक्ष मैं लेकर के आया हूं। मैंने पहले भी कहा था, अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी थक जाता है, वह तो अपनी काई से, काई उसके ऊपर ही होती है, लेकिन एकदम ठहर गया पानी तो वो काई से भी थक जाता है। तो ये ऐसे कुछ कानून थे जो खुद भी थक रहे थे, नागरिकों को भी थका रहे थे। कुछ विषय जुडिशरी से संबंधित भी आए, कुछ टिप्पणी आपने भी की, और कुछ जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर के कि सभी सामाजिक। माननीय मंत्री जी, we all are proud of our institutions. There are three main organs: जी, the legislature, the executive, the judiciary. जी, The executive has performed phenomenally. The world has recognized it. We noticed it during G20. We have seen infrastructural growth of unbelievable dimension. Alleviation of poverty has taken place. So executive is performing very well. These are not political issues, they are above politics. Our judiciary has a robust infrastructure, known for its independence globally. Our judiciary recently has taken several innovative steps. Even I have directed our secretariat to get in touch with the Supreme Court Secretariat about translation. Our judiciary has attained milestones by making available judgments in the language people understand. Many things have happened. There will always be issue between organizations because we are in a dynamic world. Those issues have to be settled. Some issues may arise from. Therefore, this parliament
This August House, the upper house, is committed to giving highest respect to all the organs because only in togetherness, in tandem, we can achieve success of our democracy to a higher level and take it to 2047 as a developed nation of the world. Therefore, the intent is that if there are difference of opinions, that is just a perception which can be smoothly ironed out. And I have no doubt with a minister like him who has seen the executive, he has operated legislature also by virtue of being district magistrate. You have dual powers. So he is eminently suited and belongs to a category of Dr. Ambedkar. So he is the right person, a right platform to smoothen out if there are any rough edges. But we take pride in all our institutions. It is this house that has done justice to one half of humanity by providing for reservation to women. It is this house that did away with the temporary provision of Article 370. Historic epochal events have taken place. So it is from that perspective, the honorable member made some reflections. We have to see it in that perspective, honorable minister. सर, आपके जो ऑब्जर्वेशन थे, आने वाले समय में जब कभी भी इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कंसल्टेशन के प्रोसेस में, आपके जो अवेलेबल सुझाव हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म पर जरूर उठाएंगे, क्योंकि सामाजिक प्रतिनिधित्व सब वर्गों का जुडिशरी में होना चाहिए। ये आज के इस ऑब्जर्वेशन का मैं सार समझ पा रहा हूं। देखिए, जो भाषा का विषय आपने रखा, एक फंक्शन में राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हम सब लोग थे, उस समय ये भाषा का विषय आया कि ऐसी भाषा में आपके जजमेंट होने चाहिए। आप जनता, आप भी तो जनता के लिए हो ना, सब हम जनता के, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहला वर्ड वही लिखा हुआ है। तीनों अंगों के लिए भी वही सुझाव है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, नागरिकों के लिए काम करते हैं। तो सरल भाषा में होगा, सब लोग समझेंगे। तो मुझे लगता है जुडिशरी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया है और इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। एक ई कोर्ट के लिए भी अच्छा काम हुआ है। अगर आपके सेक्रेटरी जनरल साहब, अगर उनके सेक्रेटरी जनरल, उनका भी पद नाम सेक्रेटरी जनरल हो गया है, हाँ, तो उसमें आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी सुविधा रहेगी। दूसरा एक विषय और, आपने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम लिया, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब का चित्र नहीं था, मतलब प्रतिमा नहीं थी। तो वो अगर 14 अप्रैल या 6 दिसंबर का फंक्शन कहीं मनाते थे तो चित्र फोटो रख करके मनाते थे। अब पहली बार जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने 1923 में अपनी वकालत शुरू की थी, उनके वकालत के 100 साल पूरे होने पर वकालत की ड्रेस में सुप्रीम कोर्ट के मेन लॉन में उनकी प्रतिमा लग गई। ये भी बहुत बड़ा विषय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दे सकते हैं आपके माध्यम से। मैं समझता हूं कि चर्चा काफी ठीक हो रही है। तो ये जो रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल जिसके बारे में चर्चा हुई है, उसको पास करने का मैं अनुरोध करता हूं सर्वसम्मति से। थैंक यू। The question is that the repealing and amending bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 4, eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 4 are adopted. First schedule and second schedule and third schedule, eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. First schedule, second schedule and third schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted.
Shri Arjun Ram Meghwal to move that the bill be passed. Honorable Chairman, sir, I move that the bill as passed by Lok Sabha be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. Honorable members, I had indicated to the House that I'll come back to the House with respect to an update on the incident. The culprits have been apprehended. The matter is under investigation and it will take its own course. Honorable members, I wish to seek sense of the House. We have special mentions. Some of the members have chosen not to be present in the House. बात कुछ भी होती है पर कारण कुछ भी हो, इस कुर्सी पर बैठने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। जो नहीं है उनके अधिकारों का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। ये मैं उनके विवेक पर सोचता हूं कि उन्होंने अपना उत्तरदायित्व कितना निभाया, किस तरीके से निभाया। I think sense of the House is that we take it on the next day. Because reading a special mention is not ritualistic. Every member is benefited by listening to it. Every member gets enlightened thereof. This is an exercise too serious and we must take it as such. Do I have leave of the House? So the special mentions will be taken up in due course. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 14th December 2023.
a bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination of the sitting of the house, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the house without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary, or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha.